Dad asked... It's been getting... Let's take a look. Guess we can rest a bit. Next on the agenda... We're way behind schedule.
It's so nice to de-stress. Boy, this stupid city's so boring. The breeze is making me sleepy. Should we really be off work this early? There is still a lot left to do. Shine down! Hey! Make yourselves a move! Hold the line! Spring forth! Scatter! Torn to oblivion! There is no escape! Propagate! Allow me! Illusion shattered! This may hurt a little. Yeah. Shine down!
Suma shines eternal! Illusion shattered! Ha! I see everything. Allow me. Scatter. Rest and rebuild! Spring forth! Propagate! Now you shall perish! There is no escape! Ha! Everyone hold hands! Scatter! Shine down! Ha! There is no escape! I see everything! Sharing my knowledge! Hold the line! Ah! Propagate! Torn to oblivion! Illusion shattered! Ha! Scatter! Let's move out. Such fortunate weather. Care for a walk? Add as. Thank you for. Yeah, a publishing house. It's releasing. Numerous works that lay out. Looks like it's about time for us to meet up with God.
Greetings, Traveler and Paimon. What time is it? Are you okay, Ganyu? You were nodding off there. Didn't you sleep well last night? I'm fine. Don't worry about me. Let's discuss the matter at hand. Since last time, I've been thinking a lot about the story Paimon told me. In essence, someone rescued a drowning man and performed some music. If that were all there was to it, it could have been many people, human or Adeptus, but the tune was allegedly so wonderful that the drowning man forgot about everything else, even his own impending death, and only came to his senses after being brought to shore. Perhaps there was an adeptal power at work in that music that he, as a mortal, could not perceive. Or perhaps he sensed a power surrounding him but lacked the words to describe it, not knowing where it came from. Either way, if this part of the story is true, then the rescuer has to have been an Adeptus. You really think so? But this story is all the way from Fontaine. Isn't this a bit of a long shot? Also, Paimon's really curious about how people from Fontaine think this fairy lady looked. Ooh, like a crystal fly's wings? That would be pretty cool. But Paimon definitely can't imagine any of the Adepti looking like that. Actually, Ganyu, if you had to save a drowning person, how would you go about it? Huh? Me? Well, I'd get them to the shore, and then I'd probably hide behind a tree and watch them for a while. Once I was sure that they were going to be okay, I'd slip away without a sound. Got it. So basically, Ganyu's the type of person who doesn't like taking credit for her good deeds. No, it's not like that. I'm just not very good at explaining things. And I also find it really awkward accepting other people's gratitude. Well, what if this Adeptus in the story had a similar attitude? That would explain why she just left without saying a word. She was probably thinking something like, One was merely passing by and saw fit to address this egregious disruption to one's graceful zithering at once. You may keep your thanks to yourself. That was actually a very good impression of Cloud Retainer, Paimon. As far as I'm aware, Cloud Retainer isn't the most musically gifted. Still, we can't completely rule her out just yet. If we set off now, we could head to Mount Outsung and ask her about it. You'll be able to confirm either way if it's her, and I can, I've been in Lea Harbor for so long now that I'm just not as familiar with the Adepti anymore. If there's anything we want to know about them, she's the best person to ask. Sounds great! And we're pretty close with Cloud Retainer by now, so we probably don't even need to bring her food this time, right? I've prepared a gift for her to mark the festival, just in case. Cloud Retainer spends most of her days studying mechanisms in her abode. She's on her own so much of the time that the moment she has someone to chat with, she just... Never mind. I promised I'd help Mr. Dvorak, and now that I've made the contract, I can't be having second thoughts. Traveler, Paimon, let's set off for Cloud Retainer's abode. Seems like this is a tough decision for Ganyu, but she's made up her mind now. Paimon gets why she'd be so anxious. Okay, how about this? If Cloud Retainer tries to start telling stories about her again this year, we should pipe up and change the topic. Wait, did she leave already? Hey, Ganyu, wait up! Paimon's so tired from trying to keep up. Don't either of you need to take any breaks? I can't believe it. Cloud Retainer is not here. Huh? Did we miss her? She doesn't like to travel,
So in the past, it's always been the other Adepti who come to visit her during the festivals. True. Now that I think about it, Cloud Retainer would be quite capable of taking care of anything on her own. There's no need to worry about her. Since she's not here, I guess the next step is to check all the other Adepti abodes, one by one. Uh-oh. Will it involve a lot more traveling? Got it! Paimon has a great idea! Please go on, Paimon. Our goal here is to find the Adeptus that helped Dvorak's ancestor, right? We can't hear any music right now, but if she's really as nice as the story suggests, she'd definitely come to help anyone who was drowning, right? Yes, I think that's fair to say. So, all we have to do is get the Traveler to pretend to fall into the water, and the Adeptus will come to the rescue! You know perfectly well that Paimon can't swim! Paimon would sink like a rock! Just trust Paimon! The water's pretty deep over there. Quick, swim to the very center! Help! Help! Someone's drowning! If only there was a kind-hearted Adeptus here to save us! Oh no! Whatever will a Paimon do? What is going on? How do you feel right now? Shenhe! And the Conqueror of Demons! Why don't you say something? Please don't make Paimon explain it. Okay, fine. Paimon will explain. We're looking for an Adeptus who's good at being a lifeguard and playing music. But if the Adepti aren't gonna stay home, then how are we supposed to find them? It wasn't me. Yeah, so this Adeptus is most likely a woman. And I am not an Adeptus, as you both already know, Traveler and Paimon. Okay, so this is Paimon's fault. No way Paimon would have suggested this idea if she'd known how awkward this was gonna be. Glad you're okay. As far as I know, the one you seek is no Yaksha. And one last thing. Your actions here caused others a great deal of worry. Do not repeat them again in the future. As ever, the Conqueror of Demons comes and goes, just like the wind. Right. I didn't dare to say a word just now. How's your training going, Shenhe? Have you made any plans for Lantern Rite? We could spend it together in Liyue Harbor if you'd like. Oh, I had planned to spend the festival with Master this year. However, Oh, speaking of Cloud Retainer, when did you see her last? earlier this morning, she set off for Mount Hulao at dawn. I noticed she was using an Adeptus art of some kind to protect a mechanism that looked like a boiler. Maybe it was a gift for Mountain Shaper. I did not inquire. So we just missed her. Please excuse me for a moment. I think I'll leave the gift in her abode. Sure. Thank you. It sounds like Ganyu and Shenhe have gotten a lot closer recently. Yes. During the summer and winter, I continue to train with Master. In the other months of the year, I have been learning to adapt to human life in Liyue Harbor. Ganyu arranged accommodations for me in the city, and also recommended several work positions for me. But when I try to blend in by referring to her as Miss Ganyu or Lady Ganyu, like the others, she says I mustn't address her like that. Sometimes I'm supposed to copy other people. Sometimes I'm not. It's a little difficult to keep track of everything. Oh, is that what it is? Noted. So, you came looking for Master today because you wanted to ask her about the Mystery Adeptus. Is that right? Yep. Oh, speaking of that, have you ever heard any music while out training in the mountains? Music? What is that? It's
relaxing sound, or a nerve-wracking sound, or even a terrifying one. Okay, I'm done. I also left her a note so that she knows where to find us. We won't miss her again. Yay! That's really helpful, thanks! We were just talking about this thing called music, and based on Paimon's description, I do believe I hear it every day. Please follow me. Oh, really? Great, let's go! Let's move out. Let's move out. This is the place. I enjoy training here to the sound of music. Oh no! Paimon's gone deaf! Paimon can't hear anything! Oh, whew! Paimon hasn't gone deaf after all! Paimon heard you when you just spoke. Anyway, where is this music? The faint sound of birdsong, the quiet murmur of the streams. These are relaxing sounds. Are they not the music of which you speak? Oh, Paimon wasn't quite done with the description. Okay, fine, it's all Paimon's fault. What we're looking for are not the sounds of nature, but melodies played on special instruments. Oh. And a melody is? Huh? Hey, why don't you just sing that one melody Shen has heard before? It'll probably help her to understand what we're talking about. Oh, was that from the opera that Yunjin sang? That was a melody, and melodies can be called music. It felt like I was transported back to the past. In my mind's eye, I could see the Zhao lanterns lighting up the night sky again. We're all there, raising our glasses and drinking to our heart's content on the Jade Chamber. As I watched Yunjin's performance, I felt a warm sensation in my heart. And as the drink reached my stomach, it went from warm to hot. When you hummed that melody just now, feelings from a whole year ago came right back to me, as strong as they were on that day. So that's the power of music. Wow, Shenhe. That was so deep! Music definitely has the power to bring up memories. It's like a time capsule with all the special moments from our lives squished inside. What about you, Ganyu? Are there any melodies that have left a deep impression on you? I don't remember if my parents ever sang any lullabies to me. I know some local folk songs. And a few other things come to mind, too. The songs of the sailors down at the docks. The little ditties that the vendors call out in front of their beloved shops. The tunes of folk artists performing on the streets. Yes, that's right. In the past, whenever I heard the sound of those tunes, I always felt that they were worlds apart from me. Nenny and Liyue probably view me as a non-human. And they are right, in the sense that I never could connect with humans' artistic expression and their sentiments. So I haven't been able to integrate into their community and be a part of their lives. At least, that's the view I held in the past. Only more recently did I start to realize that the only barriers are ones that I have erected with my imagination. The way those melodies make me feel isn't all that different from other people after all. They're about mundane details of everyday existence. Life's ups and downs, joys and sorrows. Even though we come from different backgrounds and have different stories to tell, when it comes down to the most common things that we see and experience around us each day in the city,
In that sense, we're all the same. You go, Ganyu! You're really making progress. You have loads of friends in Liyue Harbor when you think about it. Like, okay, maybe some are more like coworkers and bosses. But at the very least, Kuching and Shenna are your friends now, right? Yes, I am. Technically speaking, we should refer to each other by the conventional forms of address used among fellow disciples. But now that I know what constitutes a friendship, I do believe we are more friends than co-disciples. Thank you, everyone. Once the days are warmer, I would like to host you at my home in the city. Please invite Kuching as well. I've planted many types of flowers. I'm sure some of them will be to your taste. You are too kind. I couldn't possibly. Nonsense. You are my friend. I have cultivated and cared for the flowers just as you taught me. Once you've seen them for yourself, I am sure you can advise me how to do an even better job next time. I will save some for decoration. We can feast on the rest. Then, thank you in advance. Wait, what is that saying again? If you insist? Do people say that? I'm not completely sure either. It doesn't matter, okay? You got the point across. No need to split hairs. Paimon's more concerned about your idea of a girls' night out. Eating flowers? Really? Does this have anything to do with you both being the disciples of that illuminated bird? Who dares refer to one not by one's Adeptus title, but merely as that illuminated bird? Master. Our greetings, Cloud Retainer. Ah! There it is! The illuminated bird has landed! Double humph. Now she has the gall to use it rather than she, even after being chastised once already? Barely a moment has passed since we last met, and yet your impertinence has reached new heights. Very well. If you refuse to learn your lesson, one shall scold you no further. One has received your message from Ganyu. On the matter of the Adeptus you seek, one suspects to know their identity. Well, shall one lead the way? I still have to complete my training for today, so I will bid farewell to everyone here. Very well. Await my arrival at one's abode later this night. On this special occasion, you should indulge yourself with some savory dishes. If you want to release a Shao Lantern, come and find us anytime. Thank you, everyone. Happy Lantern Rite to you too. Let's move out. Is this Quaily Plains? Cloud Retainer, why did you bring us here? Ganyu is of course familiar with the name Guizhong, but have you ever heard of her? Guizhong is another name of Agentis, the god of dust. She was extroverted in nature and adored social gatherings and inventions alike. Long ago, this region was yet a prosperous assembly. Guizhong often invited her friends to visit her home, reserving for us seats around the largest stone table. Seagazer would always bring out his latest treasure and place it upon the table. He could be quite the braggart. Though usually a mild-mannered fellow, when it came to those collectibles he was so fond of, he always loved to show them off. Paimon remembers that name. So that's what Seagazer was like. He was an old friend and a former rival. One has many memories of him. Once he had brought out the treasure, it would predictably become the center of attention. Neither Guizhong nor one was content to let him just steal the spotlight.
So we would then also present our proudest mechanical creations. As Adepti, we were each gifted in our own ways, and naturally proud of our accomplishments in our respective fields of expertise. As a result, one often quarreled with Seagazer. His treasures were not even of his own making. He just used his exploration skills to dig them out of the ground. How, pray tell, could he compare to me, when every single one of one's accomplishments were crafted by one's own hand? Cloud Retainer, you are getting competitive again. One digresses. Regardless, every time an argument occurred, Guizhong would come over to watch us during our mutual lambastics. On some occasions, she would join in, and on others, she'd take one of us by the limb and start uttering the most ridiculous nonsense. What kind of nonsense? No kind of nonsense were we spared. Sometimes she would brazenly opine, why argue between yourselves when neither of you could ever hope to beat me? Other times, she would make unsolicited suggestions, such as, once you two are done arguing, let's go to the foot of the mountain and grill some meat. She always sought to make everyone happy, and one must say, she had quite the gift for it. No matter what nonsense she said, one never felt bothered or offended. It also helped that she never referred to one as that illuminated bird or ladybird. Come on, get over yourself! Anyway, just as our impassioned arguments would reach the apex of acrimony, Marchosius would bring his delectable dishes to the table. Who would dare snub the stove god and his wondrous creations? At the sight of him, we would all immediately drop the argument and prepare the table for a night of feasting and drinking. Back then, one was always bothered by how the cups Rex Lapis brought were always too square for one's taste. Can you see yourselves ever enjoying a drink from a square cup? Precisely. So, as you can see, even one as great as Rex Lapis was not immune to making the occasional blunder. Even one could never find fault with Marchosius's cooking. As we ate, Guizhong would continue to find topics for conversation, filling the table with humor and laughter. Each of those old fossils had their character flaws and points of obstinacy. So why was it that whenever we dined together, we always had a marvelous time? We would drink together from a spot high in the mountains, until the moon set and the sun rose, and only then would the banquet finally come to an end. Streetwood Rambler would often remain to admire the flowers with Guizhong before returning to her own abode. The glaze lilies were far more abundant back then. Entire fields of them would appear to the eye as a veritable sea of flowers. Streetward Rambler? That would be Ping. You probably know her as Madam Ping. Oh, okay. Wait, this is a lovely story and everything, but didn't we come here to find that Adeptus from Mr. Dvorak's story? Or are you saying that it was Guizhong? Didn't she, already, Alas, long has one avoided this place for precisely that reason. The sights here are a reminder of a time long gone, and evoke much sorrow. One should have guessed that you would disrupt one's poignant moment of mourning with your incessant questioning. No matter, one will share the whole story with you now. In times gone by, one quarreled oft with Guizhong concerning mechanical principles. We each had our ideals, and neither would yield. Under the pretext of a social gathering, one invited the impartial Rex Lapis to judge the quality of our creations. But Rex Lapis declared that Guizhong's Obscuro Vulpus mechanism was superior. Though one was too proud to acknowledge it, in one's heart, one knew that Guizhong was indeed the superior talent in the mechanical arts. As for the story between Guizhong and Streetward Rambler, that begins with a certain bell. In Guizhong's opinion,
While mechanisms were no substitute for human composers, they were yet capable of producing simple but fine melodies. But Streetward Rambler believed music to be an expression of the soul, an emotional enterprise that could never hope to be replicated by machinery. They argued endlessly, until one asked Rex Lapis to intercede. He confiscated the bell and designated it for ceremonial use. Thereafter, one would often find them convening in the mountains, discussing music, mechanics, and all the affairs of the mortal world. But these good times were not to last. War broke out between the gods, and soon engulfed the Guili Plains. Guizhong was overpowered by the enemy, and fell in battle. When Streetwood Rambler and I arrived at the scene at long last, all that remained among the ruins was her lifeless body. After this, at Streetwood Rambler's request, Rex Lapis granted her the cleansing bell for safekeeping. To honor our friend's memory, one made a few finishing touches to her ballistic device. Many lantern rites have passed since then. Many greetings and goodbyes. Upon what do you gaze? The Guili Plains? No. It's everything. We think of human life as like a lantern that's lit one minute and extinguished the next. But are we Adepti so different? Perhaps as dust settles after a storm, we too must one day return to the world below. One has always been austere and private by nature, and has never relished socializing. One's dealings with Guizhong were born out of discussions on the discipline of mechanics. What? You have loads of friends, and you seem pretty chatty. Just because one is not ignorant of social graces does not mean one is fond of them. One is perfectly capable of partaking in conversation despite being introverted. But in the end, one is nothing like Streetwood Rambler. She is dauntless but thoughtful, not to mention eloquent and wise. Moreover, her friendship with Guizhong was far greater than one's own. Back when they were rivals, they would often compete against one another in the realm of musical composition. That cleansing bell was one of Guizhong's proudest works, having the ability to both compose and perform. Wait, that's weird. Didn't Madame Ping say she pestered an old friend for that bell? And she also said something about being a vain beauty when she was young or something. Streetward Rambler, a vain beauty. My foot. That bell has a sad history. Clearly, she refrained from sharing with you the truth of its origins, since the right time had not yet come. As for her old friend, who else could it be? As soon as Streetward Rambler heard that a certain Zhang Li wished to borrow the bell, she realized that the man was none other than Rex Lapis, and that he had made an enormous decision. After all, we all have known each other for several millennia. Some things between us are implicitly understood. Whoa! So they were talking in secret code? Oh, Paimon did not see that one coming. Enough of your intrusions. Where was one up to? Ah, yes. One remembers now. The cleansing bell is powered by a mechanical art, and can be used to great effect as an accompanying instrument. After the passing of its creator, it was used on numerous occasions during rites of parting, but Streetward Rambler did not acquire it from Rex Lapis for the purpose of producing further funerary tunes. No. Each time she rang it, it was to play the tune that Guizhong composed on it. The two once clashed over their beliefs about the meaning of music. Who would have thought that with Guizhong's passing and Streetward Rambler's mourning, two tunes composed in discord would eventually become one harmonious composition?
Once upon a time, Streetwood Rambler also loved gatherings, liquor, and music. But after Guizhong passed, she preferred her own company. She could often be found sitting alone at a mountain summit, contemplating and reminiscing with her zither. The music would go from mournful to soothing to impassioned. Many years passed before she finally composed a melody to her satisfaction. In celebration, she played the tune to the clouds. Regrettably, one has only ever heard her play that tune once. Which brings one back to the matter you've been investigating. Perhaps it was during that performance that the ancestor of your Fontaine friend fell into the water and was saved by Streetwood Rambler. But if she was so happy with the melody, why would she only play it once? One was also greatly perplexed by this. After suppressing one's curiosity for a long while, one finally approached her and asked why she would retire the tune after having spent so long on it. In response, she said, "Though the strings that played that melody survive, the one who inspired it is gone. Tell me, Cloud Retainer, when the one attuned to my soul is no longer here, who else could hope to understand this tune?" Aw, poor Madam Pink. I just remember being taken care of by you when I was young. Once the Archon War came to an end, I stayed behind in Liyue Harbor to honor my contract. Although I met Guizhong a few times, I never knew anything of this particular story. Guizhong was quite the visionary, but tragically passed before her time. Her manuscripts still lie unfinished in the realm of clouds. Blank pages give one cause for contemplation on what might have been. Had you not decided to search for that mystery Adeptus, perhaps these stories, too, would have been lost to the sands of time. As of now, you know the truth. That the Adeptus who rescued the drowning man was none other than Streetwood Rambler. Do you intend to discuss this with her? क्या VC पे नहीं है Genshin का? भूल गया रुको मैं
Kedatang. Halo? Habis. Do you mean Ping might find the topic too distressing? Precisely. The passing of our old friend is a heavy topic that both of us are usually careful to avoid. If I may be so bold, Lebih bisa ganti Cloud filter. Retainer, could it be that this is just your own personal opinion? Oh? How so? I've been in Leo Harbor for quite a long time now, and I've witnessed many farewells along the way. So I too am well acquainted with the pain of the passing of a loved one, but this doesn't bring the city or its people to a standstill. They have to keep moving forward. Someone as perceptive and wise as Ping will surely have come to understand and embrace this. Though these immortal mountains have lost an adeptus, the harbor of mortals has gained a wise elder. No loss can ever be undone, but there is always much that can still be gained. Ping has helped countless people, and will guide many others in the years to come. And all to whom she extends a helping hand become her friends. People she can admire flowers and discuss music with. Though it is heartbreaking to lose a kindred spirit, life goes on, because there are new friends waiting for you further down the road. We even asked Madame Ping what she thought about adding a music festival to this year's lantern rite. When we get back, why don't we just ask her if she'd like to perform? Maybe we can even get her up on stage. You youngsters and your imaginations. Why don't you come with us? It's been a long time since you last spoke with Ping, and Leo Harbor is always decorated so beautifully during the festival period. Is not every lantern rite the same in this regard? Were there ever anything new to discuss? One in Ping could meet any day of the year. I disagree. Each new day and each new year is different from those that have come before. How long will you simply let them pass you by? The edibles she brought this time were indeed quite delectable. Very well. Then one will be off. If the other old fossils have sneaked away into the city to amuse themselves, one shall soon find out. All right. We should be getting back to the harbor as well. We don't want to keep her waiting. Once the Guili assembly, now the Guili plains. Say, if we planted flowers there and cared for them carefully enough, do you think that one day we'd be able to recreate the sea of glaze lilies? Allow one to take back one's praise from a moment prior. You are still far too given to flights of fancy, child. What? Cloud Retainer? You were still listening? One observed that you were making no effort to leave, and returned to chasten and hasten you. This time, one is departing in earnest. Whoa, Madame Ping and Cloud Retainer? It appears you made haste after all. One arrived but moments before you. Oh, bless my soul. To what do I owe the honor? How nice of you all to come and visit me. Miss Illuminated Bird, haven't you said anything yet? Said what, precisely? And why should one be tasked with saying it? 'Cause you're the one who's known Madame Ping the longest. Street word. Or rather, presumably, you would prefer to be addressed as Ping? Oh, Cloud Retainer, you are uncommonly polite today. Given that Lantern Rite is almost upon us, the weather in the city is most pleasant, and a sweet floral fragrance lingers in the air.
Ganyu, please continue from here. Huh? Alright. So, this all started because we were trying to help Mr. Dvorak find the Adeptus who saved his ancestor's life. Cloud Retainer informed us that the one who played that melody and rescued the drowning man was none other than yourself. Ah, let me think. Yes, I do believe I recall that encounter. What a long time ago that was. I'm surprised that you still remember it. Even more astonishing, perhaps, is the fact that this story has survived this long at all, when mortal lives are so very brief. It appears that she has proven herself right once again. Who's she? We like to call her Guizhong. From the look in Cloud Retainer's eyes, I sense that she has already told you all about her. Albeit reluctantly, one might add. There is no harm done, after all. Lantern Right's very purpose is to commemorate the heroes who gave their lives for Liyue. Although Guizhong did not live to see the splendid sights of today, she was as much a hero as any other. So how has she proven herself right again exactly? Once upon a time, she said to me that humans were a weak form of life that she wished to protect with her wisdom. But as she interacted more and more with them, her opinions on them began to change. She marveled at the beautiful complexity of their spirits, the sheer splendor of all they could accomplish through their hard work and intelligence. She told us that to underestimate human potential would be to make a grave mistake. With the smallest amount of guidance, enormous power can be unleashed in them, and a human who has reached their full potential may well be her equal. Someone who could have as much to teach an Adeptus as to learn from them. She always had a way with words. That her mechanical accomplishments were judged superior to one's own was, one suspects, in large part due to her sheer eloquence. Speaking of mechanics, Cloud Retainer, do you still remember that potted plant mechanism? The one that the two of you gave me as a gift? Of course. Guizhong and one both put an immense amount of effort into that gift. It would be no overstatement to call it a testament to each of our individual technical genius. As Guizhong once said, it takes every blade of grass and every flower to make a homeland. When I see the sight of Liyue Harbor before us today, I am reminded of this. Madame Ping looks very emotional right now. Of all of us, it was Guizhong who was the fondest of these grand and exciting occasions. If she were still with us, I'm quite sure she would still be trying to best Cloud Retainer's finest works at every opportunity. Liyue Harbor is always filled with the sound of music at this time of the year. If she were here, one is certain that she would seek you out to discuss and debate the virtues of various melodies. Oh yeah, music! We've been dying to ask. What was the melody that you played back then? Oh, also, with you being such a music expert and all, why don't you join the concert as a performer? I can make arrangements right away. Oh, as much as I don't wish to dampen your enthusiasm, it's been a long time since I played this zither. My fingers don't have the dexterity they once did, and whenever I play that tune, it always reminds me of her. I start wondering what she would think of the changes I have made to her melody. There was a period of time whenever I started strumming, it almost felt like she was back again. Sitting right there on the stone stool next to me, chatting away. Skybracer and Seagazer too, looking just like they did in the old days. No matter how much time goes by, the moment that melody starts playing,
transports me right back to that time in my memory. So the past still weighs heavily on your heart? Oh, I would be lying to myself if I claimed to have completely moved on, but that is not to say that grief doesn't get easier with time. Despite the sadness, I have found many things that bring me joy in life. It is simply the nature of the world in which we live that even if one wished to mourn for an eternity, it would be a nigh impossible feat. Just look at this potted plant. Isn't it stunning? It takes an honest and open mind to confront and conquer grief. You have indeed made progress. Be that as it may, I shall leave the Lantern Rite stage to the youth of today. Well, if you're sure. Granny! Whoa, what's everyone doing here? Did something bad happen? Ah, and now we've spooked Yanfei. No, everyone's just here to give me their regards for the holiday. Oh, that's wonderful, I'm glad. Well, in that case, happy Lantern Rite, everyone. Happy Lantern Rite. Oh, I just remembered that I have some, work to do at Yuehai Pavilion that I need to discuss with Yanfei. I haven't been able to find a chance until now. I will leave Mr. Dvorak in your capable hands. Cloud Retainer, Ping, we will be off for now. Huh? Does it have to be right now? Which case is this again? Hey, Ganyu! It seems Ganyu still has much to learn when it comes to the art of deception. What a pity. She has learned nothing of one's ability to carry a conversation. Since it's been so long, Cloud Retainer, why don't you stay? I'll make a cup of tea and we can chat a while. Gladly. This was one's intention as well. When you next see the Fontaine musician, please give him my regards. I'd like to wish him the very best with the concert. You got it, Madam Ping. Thank you all. I think you've listened to enough of my nattering for one day. As for that melody, I will play it for you all another time. Goodness knows I need to practice it first. Wow, that'd be great! We'll look forward to it. When that time comes, wherever her spirit may be among the countless grains of sand and specks of dust between the harbor and the mountains, perhaps she will look at the Liyue of today and steal a smile when she sees the prosperous land that it has become. All right, let's go tell Mr. Dvorak the news. This is a peaceful neighborhood. This is a peaceful neighborhood. Respect must be given to the will of every creature.
Keqing's here too! Thanks for helping set all of this up. Welcome back. Did everything go well? Really, really well. We found the person Mr. Dvorak was looking for. Are you serious? I see. So the melody my ancestor heard was an Adeptus remembering her late friend? That certainly explains why it was such a powerful and poignant tune. Huh. That's a really interesting first reaction. Guess that comes with having a musical mind. I have to say, though, it's hard to believe that the fairy from the tale is now an elderly granny. Oh, Paimon knows exactly what you mean. Normally, Adepti don't age at all. But Streetward Rambler, or Madame Ping as we know her, probably only became old because it's what she wanted for herself. Madame Ping possesses vast knowledge and great wisdom. Whatever physical form she may decide to take, her mind and wits are as sharp as they come. Yep, Keqing summed it up perfectly. That's exactly what Paimon was trying to say. I think... yes. I must thank her in person. That can wait until after the concert, though. For now, I need to devote all my emotional energy to the performance. Ah, speaking of, Madame Ping wishes you all the best at the music festival. Paimon has a sneaking suspicion that she'll stay in her usual spot, but listen to the performances from afar. Wait, are you serious? Huh. Oh no, now I'm starting to get nervous. Okay, alright. Nope, another rehearsal is in order. Please excuse me, everyone. Mr. Dvorak? He's already gone. Paimon wasn't even finished telling him everything. Before we set off on our search with Ganyu, he asked us about what music means to people. After our recent adventure, Paimon thinks we have a lot more to say about that now. Please, share your insights with me. Well, we found out that music can be used for good, but also for bad. It can make people happy and moved, but it can also be sad and bittersweet. And music is like a kind of memory written in people's hearts. It can put you in touch with feelings from a totally different time and place. It sounds like you had an eventful trip. Don't worry, I'm sure Ganyu will fill me in on all the details shortly. Wait, does that mean you're gonna carry on working? Mm-hmm. Just a few things to wrap up. All the groundwork is done. As long as everyone enjoys the festival activities, all our efforts are worthwhile. Happy Lantern Rite to you as well. Whew. That should be everything taken care of, right? Oh, no, wait. Paimon feels like she's forgetting something. What was it? Oh, it feels like it was a while ago. Shoot! Latent... Wait, no. Anyway, fancy bamboo shoots! Zhang-Li said he wasn't in a hurry, so if we went now, there's probably still time, right? Anyway, even if we don't make it, it's not our fault. He could have totally picked him by himself. Ugh. Anyway, let's go check with him at Wangsheng Funeral Parlor. To survive hardship, you must prepare for hardship.
so lively! This is how a festival should be. Respect must be given to the will of every creature. Each fish in the ocean swims in its own direction. Wow, so lively! This is how a festival should be. Yaya Publishing House has released numerous works that lay out military strategy in a simple and pragmatic way. Those are my favorite. So lively! This is how a festival should be. To survive hardship, you must prepare for hardship. Wow, so lively! This is how a festival should be. Wow, so lively! This is how a festival should be. Yaya Publishing House has released numerous works that lay out military strategy in a simple and pragmatic way. Those are my favorite. Wow, so lively! This is how a festival should be. To survive hardship, you must prepare for hardship. Wow, so
Yae Publishing House has released numerous works that lay out military strategy in a simple and pragmatic way. Those are my favorite. So lively. This is how a festival should be. Wow, so lively. This is how a festival should be. To survive hardship, you must prepare for hardship. So lively. This is how a festival should be. Respect must be given to the will of every creature. Each fish in the ocean swims in its own direction. Wow, so lively. This is how a festival should be. To survive hardship, you must prepare for hardship. So lively. This is how a festival should be. Respect must be given to the will of every creature. Each fish in the ocean swims in its own direction. So lively. This is how a festival should be. To survive hardship, you must prepare for hardship.
Wow, so lively! This is how a festival should be. Let's move out. Let's move out. Da 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 da. Oh. All right, let's take a break here. Oh wow, look who it is! Are you here to hang out with everyone's favorite funeral director? So you're just casually practicing your rapping skills at the entrance to your funeral parlor? After everything we've been through, you don't see me for a hot minute, and you're back to being scared of your own shadow. We have all this open space, a clear view of the mountains behind and the sea in front. Not to mention we have several invisible audience members enthusiastically cheering us on. It's the perfect spot to rehearse. Invisible audience members? Gotta say, it took me a few days to get used to Director Who's way of talking. Xinyan was pretty spooked too when she first got here. Just like when she sees a frog, but a giant frog with sharp teeth. Come on, knock it off. What's wrong? I've never seen someone look so confused before. Well, don't worry, because Director Who's here to explain it all. There once was a Fontaine musician who went around town on a mission. He came door to door for his iridescence tour, looking for acts to audition. With my words, Shenyan's chorus, and Yunjin as our mentor, we'll take the stage by storm with flames roaring and the whole audience calling for more. For sure! The whole dance floor will be yelling encore! Encore! Oh, now Paimon's rhyming along. But when you say flames roaring, are you sure this'll be safe? No, don't you worry about that. I'm pretty experienced on the stage, and I've already informed the Yuhong of all the pyrotechnics we're planning on using. Huh. Guess we'll just have to trust Xinyan on this one. Oh, Zhongli. He took one of those fancy meal boxes and set off for the mountains. Said he wanted to pay a visit to some old friends. It's a real pity that he couldn't be around for this. As well as being a true connoisseur of traditional art forms, he's able to appreciate Xinyan's performances too. Yeah, that's right. Matter of fact, he was the one who first invited me to perform here. To tell the truth, though, I never thought I'd really find myself rehearsing here one day. Well, now you know. The Wangsheng Funeral Parlor is a great location. All of you are always welcome to come and hang out here, especially if you're in the mood to try something new. I can speak to that. Hu Tao is always full of fun surprises. And jump scares. Actually, Xinyan, I have some lyric ideas for your part. Do you want to go through them together? Sure thing. I'm all ears. Oh, Traveler and Paimon, I believe Zhongli was heading to Mount Hulao, so make sure you're hiking up the right hill. When you see Zhongli, please pass on this message to him. It's up to him whether he wants to support us at the performance tonight, but I expect him to make time for the upcoming banquet we're planning. No excuses. You should join us too. It'll be a riot. If there's one thing I've learned from being a funeral director, it's how to throw a party. Breathtaking. Paimon sees them! It's illuminated deer! And illuminated bird number 2! A familiar face. Have you come from Liyue Harbor?
How is the city nowadays? Everything's great! But you know, if you're so curious, you can always go and check it out for yourself. In fact, Mooncarver has been taking many walks on Mount Tianheng in recent times. I believe the sights of the city are quite familiar to him. Zhongli! Here you are! We've brought the bamboo shoots you wanted. Impeccable timing. Traditionally, bamboo shoot soup ought to be slow-cooked for many hours on low heat. Using Adeptus arts to hasten the process is something of a shortcut. Wait, that mechanism... is that... Indeed. Cloud Retainer kindly lent me her supreme cuisine machine. Can we not just call it a cooking machine? Actually, never mind. She seems to take a lot of pride in her mechanical gizmos, so it's probably best if Paimon doesn't go changing the name willy-nilly. I trust that you found the answers you were seeking during your recent journey. Excellent. The past should be remembered, but not overly dwelt upon. Our journey should be seen as a means to take on more from the world around us. When the bamboo shoot soup is ready, I must insist that you try some for yourself. Oh, Zhongli! Huta told us to tell you something. She said, it's up to him whether he wants to support us at the performance tonight, but I expect him to make time for the upcoming banquet we're planning. No excuses! When she says performance, she must mean the Lantern Rite Music Festival. As for the banquet, she didn't tell us anything more about that, but she invited us to come as well. As you can see, I have a prior engagement with 2 Adepti friends of mine tonight. Please, give Director Hu my best wishes for the performance. As for the banquet, since the Director insists, far be it from a mere consultant like myself to refuse. Yay! Then we'll see you there? Absolutely. Rex Lapis, the bamboo shoot soup is ready. Thank you. I will examine it right away. The appearance is exquisite, and the aroma rich and intense. The craftsmanship of this machine is commendable indeed. Since you came all this way, you should not leave empty-handed. Please, take some soup. It tastes most exquisite while still warm. I'm honored to be here on the Iridescence Tour stage. All right, without further ado, I'm Xinyan, this is Hutao, and this is a little something called... Hello viewers, क्या हाल है? The Flame Lilies! I'm up here blazing trails through the midnight sky, lighting up the world below. And when the crowds all hear my voice, they'll meet the spirit of rock and roll. Let's go! Hey, you butterfly, you two buzzing by, guiding your way to the afterlife, opening the path without a fright. Oh, I'll light the fire, watch it blaze across the universe. I'll spit my rhymes, watch it set, or you'll get burned. Hey, woo! Does anyone have any plans tomorrow? With another year behind us, I think we deserve a celebration of our own. My treat. Interested? The Tianquan footing the bill? I can't miss out on that.
May the year ahead be a blessed one. I believe it shall be. Master, the Shao Lanterns. ऐसे भी आपने वो देखा है एनिमे? Elementary. One shall वैसे fashion क्या? for you a Shao Lantern the likes आपने of which the Bastard world Heavy has Metal never Dark Fantasy seen. कौन सा? You must take it to Liyue Harbor Bastard. to display its नहीं magnificence for Heavy Metal all. Dark Fantasy. नहीं देखा. Listen, that must be Madame Ping. Halloween. Let's move out. Shine down. Hey! Allow me! Ha! Everyone hold hands! Hold the line! Propagate! Hey! Illusion shattered. I see everything! Rest and rebuild! Everyone hold hands! Ha! Shine down.
ट्रैवलर को एनर्जी चार्ज की जरूरत है। क्या हुआ? ट्रैवलर को एनर्जी चार्ज की जरूरत है। पता है तो मैं एनर्जी चार्ज इसको दिया हूँ, तो भी दिया हूँ ना। मैं भी इसमें सैंड नहीं मिला इन तुम भी बिल्ड कर रहे हो क्या वो? क्या ट्रैवलर मतलब मेरे पास वो था ना, पड़ा हुआ है वो, क्या नाम है, क्या कह रहे हैं, फोर प्लीज फ्लावर ऑफ पैराडाइज लॉस्ट का तुम्हें भर दिया उसमें। डीपूट डाल दो ना उस पे, नहीदा के साथ रख लो, डीपूट डाल दो। डीपूट नहीदा पे डाला है अभी, वही तो कह रहा हूँ, नहीदा के साथ उसको रख दो, डीपूट डाल दो और उस पे नया वाला सेट डाल दो नहीदा पे, समझ रहे हो? तो उसमें क्या है, वो डीपूट का भी फायदा हो जाएगा और नहीदा का डैमेज क्योंकि आएगा, तुम्हारे ट्रैवलर का बहुत ज़्यादा डैमेज नहीं आएगा। क्या कहते हैं, जो वो जितने भी रिएक्शंस होंगे ना उसके, वो ट्रैवलर से नहीं होंगे, वो नहीदा से होंगे ना। लेकिन वो मैक्स करना पड़ेगा, मैक्स किया नहीं है, बाद में करूंगा। तभी तुमने ट्रैवलर को रखा हुआ है ना, वो उसका डीपूट का भी काम हो जाता है और इसका भी हो जाता है, डैमेज काफी ज्यादा आ जाता है। एक चीज करने, नाहिदा का वेपन निकालना है। नाहिदा की भी एलिमेंट मास के पास आता है। सोच रहा हूं सैक्रिफिशियल डालूं या फिर वो डालूं, ये एवरलास्टिंग डालूं। हां वंडरिंग इन्वेस्टर डालूं, सैक्रिफिशियल डालूं। मैंने तो वो डाला हुआ है नया वाला, जो वो नहीं है रिट्रेट वाला वेपन। कौन सा? वही प्राइमोर्डियल जेट कटर। हां वो मैंने डाला हुआ है। नाहिदा पे कैसे डालूंगा? अच्छा नहीदा की बात कर रहे हो? नहीदा पे कोई एलिमेंटल मास्टरी का ही डालो ना। 500 मेरी ईएम है भैया, मैं विट से डाल के रखा। तो 500 क्यों, तुम्हारे 800 होनी चाहिए भाई ईएम। मैं सोच रहा हूँ कोई मैं जरा देखूं कितना वो देता है जरा। क्या चीज? उसका टैलेंट नहीं, सैक्रिफिशियल फ्रेगमेंट लेवल 90 पे कितना देता है? एलिमेंटल मास्टरी देता है क्या सैक्रिफिशियल? हां क्या बात कर रहे हो? 221 एलिमेंटल मास्टरी देगा 90 पे। सही है, मतलब मेरा ईएम पहुंच जाएगा 728। 728 भी बुरा नहीं। Strike is won. As a good knight should. I must leave no stone unturned. Husk of opulent dreams पड़ा है। हजार रुपए कर सकता हूँ। मैं सोच रहा हूँ कि वहाँ पे डेंटरा पहुँच रहे हैं, एलिमेंट हॉस्पिटल गॉबलेट, ये सोच रहा हूँ। आए बताओ, अगर तुम्हारा एल्डर मास्टरी देखो, अगर तुम्हारा 800 हो जा रहा है तो फिर तुम डेंटो डाल दो, नहीं हो पा रहा तो तुमको फिर वही डालना पड़ेगा। 728 है, अल्टीमेट तो पहुँच ही जाएगा। नहीं अल्टीमेट में नहीं पहुंचेगा। अल्टीमेट में तुम्हारे वो क्या कहते हैं, तुम्हारी 800 होगी ना तब तुमको 200 मिलेगा, समझ रहे हो? मतलब अप्रॉक्स मान ले 728 900 के ऊपर तो पहुंच ही जाएगा। 900 के ऊपर पहुंच जाएगा। बस उतना ही चाहिए, 800 चाहिए होता है ना मैक्स, तो 800 ही चाहिए होता है। हाँ 800 हमारा मैक्स चाहिए होता है तुमको 1000 करने के लिए, उसका क्या कहते हैं उसके पैसे का फुल यूज करने के लिए। 728 मतलब ठीक है, उतना ही उसका। यार वेपन का ट्राई कर लेंगे इसको। मेरा करंटली जो उसका वो है ना, वो 38 क्रेट रेट है और 120 क्रेट डैमेज है नहीदा का। मेरा 45 165। सही है, लेकिन मेरा वो ना विटसेट डाला, विटसेट चेंज। ओह हाँ विटसेट से तो हाँ 60% उससे मिल जाता है ना।
वेट से कैसे एक्चुअली गैम्बल है। अगर मुझे वेट से की पैसे 450 420 एलिमेंट मास्टर के फिर तो बढ़िया है। लेकिन बाकी उसमें वो भी है ना, एलिमेंटल डैमेज भी तो है ना, और अटैक परसेंटेज का है। मतलब तीनों ही अच्छे हैं। एलिमेंटल डैमेज से तो काम हो जाएगा, लेकिन अटैक परसेंटेज का तो उतना ज्यादा यूजफुल नहीं रहेगा, क्योंकि उसका शायद ई जो है ना वो अटैक से स्टैक थोड़ा ना करता है, तो उसको उससे करता है ना, एलिमेंटल मास्टरी से। दोनों से करता है। दोनों से करता है। 165% अटैक और 330 एलिमेंट लेवल 8 का बता रहा है। 170% अटैक से करता है, 350 एलिमेंट मतलब ऑलमोस्ट डबल एलिमेंट मास्टर। मतलब 1:2 का रेशियो है वो बात। जितना अटैक से करेगा उसको डबल एलिमेंटल मास्टरी से करो। तो एलिमेंटल मास्टरी पे इन्वेस्ट करना ज्यादा वर्थ इट है। ना नहीं वो तो है ही, तभी तो एलिमेंटल मास्टरी से बनती है ना। और दूसरी चीज वो है कि एलिमेंटल मास्टरी का तो वो तो अलग चीज है, बाद में जो डैमेज आएगा जैसे तुम्हारा डेंड्रो कोर्स इन सबका, तो उन सबका भी तो डैमेज बढ़ेगा ना तुम्हारे एलिमेंटल मास्टरी से। वही तो मैं वही सोच रहा हूँ सैक्रिफाइस। अब मैं इसकी इतना अटैक की इतनी जरूरत नहीं पड़ती ना इसमें ना। इसको नहीदा को नहीं अटैक की कोई जरूरत नहीं पड़ती इसको। वॉन्डरिंग इवेंट स्टार देखता हूँ। वॉन्डरिंग स्टार लेवल 80 पे कितना देता है? एक कोई था जो 4 स्टार ही दे, लेकिन वो 200 के ऊपर एलिमेंटल मास्टरी देता है। एक अरे वो 165 देता है यार। नहीं एक है 4 स्टार में जो 200 के ऊपर देता है। तो बोला सैक्रिफिशियल फ्रेम। अच्छा वही देता है क्या? या माप्पा मोरे बोल रहे होगे? मुझे नहीं पता, हम माप्पा मारे शायद मेरे ख्याल से। नहीं सैक्रिफिशियल देता है 221। और माप्पा मारे देखो 165 देता है वो तो। और ये लेकिन वांटिंग स्टार की पैसिव अच्छी है कि जब भी कैरेक्टर का वो बढ़ा देता है ना। ट्रिगर द फॉलोइंग इफेक्ट्स विल ट्रिगर एवरी 10 seconds. The keeping character will gain 24% of their elemental mastery as bonus attack for 12 seconds. Members gaining 30% of this buff for the same duration. Multiple instances of this weapon can allow this buff to stack. This effect will trigger even if the character is not on the field. ये है ना, तो दूसरों कैरेक्टर्स की डैमेज बढ़ाई तो काफी फायदा है वैसे। अच्छा दूसरे कैरेक्टर्स का डैमेज बढ़ा रही है तो कितने आई ऑफ परसेप्शन है भाई मेरे पास, मजाक चल रहा है। मेरे पास R5 पड़ा है। 4 4 8 9 10 आई ऑफ परसेप्शन पड़े हैं, मैं 2 R5 कर सकता हूं इसको। मेरे पास सैक्रिफिशियल 2 पड़े हैं, मतलब R5 ऑलरेडी कर देता हूं यार एक R5 में इसको। देखो दिक्कत है मेरे को मैक्स करने पे मैं एनहांसमेंट और खत्म हो गया। तो मैक्स एक तो उन्होंने लिमिट डाल दी ना बाबा, एनहांसमेंट कितने बना सकते हो आप शॉप पास। हां वो दिन के ना, वो तो पहले से ही पड़ी है लिमिट, वो अभी थोड़ी ना आई है। मैं अभी नोटिस किया, वो बनती नहीं जल्दी। वो बहुत पहले से, मेरे ख्याल से जब से गेम आया तब से वो लिमिट है। तुम एक दिन में एक लिमिटेड अमाउंट ही बना सकते हो, क्योंकि मैं शायद यार 30 या 35 के अराउंड था ना, तब मेरे साथ ऐसा हुआ था। मैं लेकिन मैं एक साथ काफी सारे बना रहा था ना, तो वो बन नहीं रहा था, तो मैंने वही पूछा था, तो वो कानिकी ने बताया था कि वो लिमिट है एक दिन की। दिन कितने बना सकते हैं? 5 मिलते हैं ना। अब ये क्या चीज 5 मिलते हैं? 30 दिन के 30 बना सकते हैं बस। अब 30 अब ये नहीं पता मुझे, लेकिन लिमिट है उसकी। काय की लिमिट है? वही दिन में कितने एनहांसमेंट और बना सकते हो। एनहांसमेंट खत्म हो रहे भाई, क्रिस्टल चेंज खत्म हो रहा है। टीम में रखता हूँ तो इसकी एलिमेंटल मास्टरी 915 हो जाती है नहीदा की, तो टीम में नहीं रखता हूँ तो 883 है। टीम में तो अच्छा वो होगा ना, शायद आपको कुछ पैसे रहते हैं। मैं टीम में कितनी हो रही है? अरे नहीं इससे बड़ा होगा, मैंने शायद लेवल 20 किया है एक आर्टिफैक्ट, उससे शायद थोड़ा बढ़ गया होगा। ये वाले में थोड़े से बढ़ाने पड़ेंगे, उसमें बढ़ा लेता हूँ उनको। मटेरियल्स नहीं है यार फीड कराने के लिए इसको। मेरे इसके एलिमेंटल मास्टरी बहुत कम 500 आती है। जो नायदा का वेपन निकाला जाएगा। नायदा का वेपन निकाला जाएगा। निकाल लो। जीनी का चिराग उसको घिसना देखना कुछ निकलेगा उसमें से। बाकी सब चलेगा। लोग कह रहे कि हाइड्रो आर्कॉन
शायद एचपीएस चेक करेगी और फ्रॉड यूजर ही होगी। ओ भाई क्रिट डैमेज और बढ़ गया इसका। सही है। नईदा को ऐसे स्टैट्स क्यों मिल रहे हैं भाई, मुझे समझ नहीं आ रहा है यार। अच्छा है ना, ऑर्डर बढ़ेगा नहीं था। मुझे स्कैरामूश के लिए फार्म कर रहा हूँ भाई, स्कैरामूश के लिए आर्टिफैक्ट ही नहीं मिल रहे, इसके लिए तो मतलब आर्टिफैक्ट ऐसा लगता है कि भर भर के मिले ही जा रहे हैं। किलो तुम और डाल दो, जो आर्टिफैक्ट और अच्छे हैं उससे उससे अच्छे डाल दो। क्या ही बोले यार। क्रिट रेट और बढ़ गया, बताओ यार। अच्छा है ना भाई, 3.9 हाईएस्ट रोल हुआ है। क्या ही बोले यार। 41.9 क्रिट रेट हो गया और 126 क्रिट डैमेज हो गया। हाँ बहुत डैमेज आएगा। अभी अगर मान लो मैं इसमें विटसेट डालता हूँ, किधर है विटसेट, ये रही। 55 मिलता है, मुझे लगा था 66 मिलता है। तो इसका 181 क्रिट डैमेज हो जाएगा और एलिमेंटल मास्टरी 618 हो जाएगी, काफी कम है। 32 एलिमेंट मास्टर तो आपका पैसे से 181 क्रिट डैमेज, लेकिन उसका पैसिव काफी काम आ जाता है ना नहीदा का। हाँ। नहीदा का बता रहा हूँ ये। अभी अरे ये जो टैलेंट नहीं है इसका, ये वाला, ये 80% बोनस डैमेज दे देता। अगर ये मान लो क्रिट डैमेज होता ना तो थोड़ा सा कम डैमेज पड़ता है, लेकिन बोनस डैमेज की वजह से ये क्रिट और नॉन क्रिट दोनों को 80% एक्स्ट्रा डैमेज देता है। ये ज्यादा फायदा तो देखा जाए तो इसका एक तरीके से 200 से ऊपर क्रिट डैमेज है। और ईएम और वो कितना 24 क्रिट 65 क्रिट रेट है। 65 क्रिट रेट है और 200 से ऊपर क्रिट डैमेज है। इससे अच्छा क्या ही बिल्ड हो गया भाई। वो चेंज करना पड़ेगा तो। नहीं दा एलिमेंटल मास्टरी का बड़ा 800 एलिमेंटल मास्टरी कर दो बस, उसके ऊपर जरूरत नहीं है। 728 हो जाएगी बस, 728 भी ठीक चलो। आगे वेब फिर क्या आर्टिफैक्ट से निकालने की कोशिश करते हैं। If you ever गिल्डेड ड्रीम्स इसको डाला है फिर आपने? गिल्डेड ड्रीम्स किसने? मैंने गिल्डेड ड्रीम्स कहीं नहीं डाला भाई, किसी पे नहीं पड़ा गिल्डेड ड्रीम्स। गिल्डेड ड्रीम्स का भी 4 पीस है मेरे पास। एक ये है और एक ये है जो शिनियान पे पड़ा हुआ है। इसके भी काफी अच्छे स्टैट्स निकल गए थे। मतलब ऐसा है जो आपको नहीं चाहिए वो बहुत अच्छे मिल जाते हैं। और क्या है, और चाहिए वो मिलता ही नहीं। मेरे ट्रेंड 9 करने पड़ेंगे। नहीं तो टैलेंट 9 कर लो। 2 किताब चाहिए तो अरे स्कारा मारना पड़ेगा। मार लो। मैं आपके लिए स्कारा खुला ही नहीं मेरा। वाह भाई सही है, स्कारा नहीं खुला बताओ। मुझे भी तो जाना पड़ेगा ना स्कारा के लिए, क्योंकि तुम तो जाके स्टार्ट नहीं कर सकते ना, स्टार्ट तो मुझे ही करना पड़ेगा। मैं थोड़ी जाके मार के आऊंगा। अब तो भाई मैं वो उसको मारना बंद कर दिया है मैंने, क्या कहते हैं, अरे उसका क्या नाम है, सिनियोरा। उसके बहुत ज़्यादा टैलेंट मटेरियल हो गए हैं। मैं बाकियों को मार देता हूँ, मैं उसको स्टॉर्म ड्राइवर को मार देता हूँ, तुरंत मर जाता है। मुश्किल से 30-40 सेकंड के लिए वो जिंदा रहता है बस। वो तो कुछ दूसरा है। ये नाहिदा रखो, देखते हैं क्या नाहिदा रखूं। डैमेज नाहिदा का नाहिदा तो डैमेज देगी किससे?
नहीं यार, इसमें दूर से मारो, मैं रेडी ले जा रहा हूँ ना। हीलर भी चाहिए भाई, एक हीलर एक रख लो। कोकोमी रख लो आप, कोकोमी। नहीं नहीं, मुझे वो चाहिए शील्डर। अरे भाई मेरे पास हीलर नहीं है, सही समझो यार। अरे यार क्या तुम नाटक करते हो यार समा। क्यों रो रहे हो बे दोनों मिलके? हीलर नहीं है सोमा के पास, बता रहा है। तो नहीं है तो नहीं है कैसे नहीं है भाई, हीलर तो होनी ही चाहिए। बारबरा C6 पड़ी है, चीची पड़ी है, हीलर नहीं है बता ये रहा है। नहीं है, चीची नहीं है, नहीं मिली नहीं यार, तभी तो दिक्कत है। वाह भाई। डियोना रख लेते हैं, डियोना शील्ड भी देती है, हील भी देती है, और सबको शील्ड देगी। अरे पड़ गया, इतना छोटा सा बन के आ रहा है भाई उसके में। मारो ये दबाओ। तो 36 के बाद I see everything. Solidify. Allow me. लो मैंने भी तोड़ दिया इसको। Commit to memory. दूसरे साइड में प्रॉब्लम होगी भाई। ये क्या है? हेलो? अरे भैंस, ये क्या मेरा गेम अटक गया भाई? क्या चल क्या रहा है? चल गया। अरे डैमेज नहीं हुआ मुझे सही है। पागल हो गया भाई ये। और ये भैंस की मर गई नहीं था। बाप रे नाइदा मारती है। अरे भैंस की पड़ा नहीं उसके। मैं नहीं फेंका, मैंने कहा पड़ा कैसे? अरे मैं तो डैमेज टैंक करूंगा, मारो भाई। मैं डैमेज टैंक, मैं कैसे टैंक करूंगा, बात वो है ना। ए भाई शील्ड टूट गई। गिरने वाला ही है। आपको ही मारना है इन सब। तुम्हें मारना है भाई, मैं कैसे मारूंगा? मैं कैसे मारूंगा? मुझे नहीं पता, वो तुम जानो। एटलीस्ट आपके पास है ना। अब इन पे तो मार्क भी नहीं लगेगा भाई, क्या ही किया जाए। नहीदा का मार्क भी नहीं लगेगा उनमें, और डैमेज नहीं पड़ रहा है इनको। हेलो, इनको डैमेज भी नहीं पड़ रहा है, डैमेज भी नहीं पड़ रहा है। ये क्या हो रहा है? वो समय डैमेज किसी नहीं पड़ रहा है। बाहर निकलो भाई, मैं आज बाहर जा रहा हूँ। इनको डैमेज भी नहीं पड़ रहा है। लाओ नहीं ना। इलेक्ट्रो पड़ता नहीं इन पे, क्या है भाई? तो मैं तो हाइड्रो भी मार रहा हूँ, हाइड्रो मार रहा हूँ, डेंड्रो मार रहा हूँ, कुछ पड़ ही नहीं रहा उसमें। क्या बाहर नहीं आए क्या तुम अभी तक? अलग ही सोच ला भाई, पढ़ मार रही ना वो। वह क्या हुआ तुम्हारा, वो हो गया क्या? क्या? बाहर आए कि नहीं है? आ गए ना बाहर। हाँ ये। चलो तुम कुछ भी लो, मैं गानी और जोंगली लेके जा रहा हूँ। कुछ भी पिक करो। हीलर ले लो, बारबरा ले लो, क्योंकि तुमको शील्ड विल्ड नहीं है ना तुम्हारे पास। अरे हम हीलर दिखाते हैं। बारबरा रख लो और ये रख लो, क्या नाम है इसका, चाइल्ड। जब देखे हमारा भिखारी को मैं थोड़ा आर्टिफैक्ट दी कैसा हुआ है। We're way behind schedule.
Let it be known that divinity is mine. Solidify. Access denied. Perish! My body! It's... 7,000 का डायल पर हाँ You cannot defy me, mortal! At my command, you shall fall. Stabilize. Born of ice and frost. Insignificant. डैमेज क्यों नहीं अभिषेक भैया? क्या डैमेज नहीं है, मार तो रहा हूँ मैं। नहीं नहीं I am the all-knowing God. कहाँ का भगवान है भाई? पता नहीं समझ नहीं आज। मेरे नुक्कड़ का है। तो भगवान भगवान बोलते रहते पूरे सब। बगल में कॉर्नर में रहता है भाई। बहुत मारा था लास्ट टाइम। छू गया। मैं भाई मिस कर चोमा चाचा लोग आज शिफ्ट हो जाएंगे क्या? नहीं बता भैया। Stabilize. कल से आएगा फिर आज वाली। Reality is pain. साधना कम ही लगता है कि एक ही बार में सब अच्छे पर जाने देखने का बात। ये भाई चल Good riddance, cruel world. कैंसर काम है भाई, क्या ही होता हूँ। Next time it not possible. Gather. Born of ice and frost. भाई 60,000 की मेरा प्रूफ पड़ रहा है। देख रहा अभिषेक भैया? ये अभिषेक ने मेरे कैरेक्टर बिल्ड नहीं किए भाई, गड़बड़ आदमी। ये बारबरा का 60,000 का प्रूफ पड़ रहा है। मैं इसको रेडिन तो बारबरा क्रायो डैमेज देना शुरू कर दिया ना? नहीं वो क्रायो दिखाता है। मैं इसको रेडिन का आर्टिफैक्ट मतलब वेपन ला करके दिया। अभिषेक ने रेडिन नहीं बिल्ड नहीं करी, इसमें मेरा बाढ़ में की रेडिन। क्यों अभिषेक ऐसा क्यों किया भाई तुमने? क्या हुआ? मैं बोल रहा हूँ मैं तुम्हें रेडिन का वेपन ला करके दिया, तुमने रेडिन बिल्ड ही नहीं करी। मैं तो उसको फार्म तो कर रहा हूँ, उसमें आर्टिफैक्ट्स नहीं मिला तो उसमें क्या ही वही कर तो सकता हूँ। पूछ रहा हूँ कि तुमने ऐसा क्यों किया भाई, रेडिन के साथ मेरी गुस्सा क्यों निकाला भाई? मैंने को निकाला ही नहीं। आर्टिफैक्ट मिले तो मैं डालूं, आर्टिफैक्ट है ही नहीं, कहाँ से डाल दूं मैं? बेचारी रेडिन वो दाद बैठी है। भाई कितने कितने के पेमेंट गए हैं भाई मेरे अकाउंट से। 50-50 हजार का मेरे को 5 पेमेंट दिख गए। मजाक मजाक वो अरे सोमा तू क्यों आ गया वे? कुछ इनकम टैक्स उठा के लेके मेरे को। अरे वो है स्कारा का।
ये भाई, ये भाई। Where I'm from, if we क्या didn't रख keep रहा है क्या moving, सही we'd में? freeze to death. यहाँ पर शोगन रख लो, शोगन। अभिषेक, ओ अभिषेक दल्ले। हेलो, ओ अभिषेकू, अभिषेकू दल्लू। अभिषेकू दल्लू। अरे मार्च का है तो मतलब वो था फेब का, फेब मार्च। लेट मी सी इज द बाद में करेंगे बेटे जी, बाद में करेंगे बेटे जी। देखो ये है फेब, ये है मार्च, ये अक्टूबर का, ये जुलाई का, जुलाई, ये मई का, ये मंथ का है, अप्रैल का, ये अप्रैल, अप्रैल मई। अरे सोमा किधर बैठा है भाई? हेलो, तेरे घर पे बैठ गया वो आकर के। अरे इसका लोडिंग भी ध्यान नहीं दिखा दिया रहा था क्या? भाई अभी तक। निकाल दे बे वर्ल्ड से, खुद करता रहेगा बाद में। नहीं क्या तो तू लोड वो ले निकाल रहा ही सकता ना, कोऑप एंड नहीं कर सकता अगर कोई लोडिंग पे है तो। बोल रहा हूँ एक ही बार करना था ये। हाँ मेरे पास 20 रजी नहीं, वो लेके वो क्या कहते हैं, हो गया था इसीलिए। मेरे को साइंस ही जल्दी जल्दी अपनी जमात में सबको शामिल कर लो, सबको गेंशिन सिखाओ। क्या बोलते हो? मई का हो गया, का हो गया, नाम है डोमेनो जुलाई बास्केट का हो गया, क्या नाम है? डोमेनो मास्टरी, गया बास्केट ऑफ डिसिप्लिन। फेब्रुअरी का हो गया। अरे समय वो शुगर वाला देखा है क्या? शुगर वाला देखा है? हाँ हाँ ठीक है, मतलब एक रिकमेंड तो नहीं करूंगा देखने के लिए। अच्छा साल है। पर ये आप बोर हो जाओगे।
अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर बचा है, नवंबर, दिसंबर। आता हूँ। एमएल पे चल रहा है बेस्ट विंटर एनीमे कौन सा? एक ही है भाई, कौन सा सबसे बढ़िया है जो आया है? मिस्फिट ऑफ डीमन किंग एकेडमी। वो तो हिट हो। क्या रेटिंग दी है वैसे? वो 7.5 होगा, और अगर वो नहीं हुआ तो बोफुरी ले जाएगा फिर। वैसे और इसकी भी रेटिंग अच्छे काफी आई थे बड़ी नहीं यार। थी, 8.83 ले रहा है। वो तो ठीक है, वो अपने आप नीचे हाइप नीचे हो जाएगी, काफी समय बाद सीजन आता है तो हाइप बढ़ती है ना। बोफुरो की, हाँ बोफुरो का ऊपर ये भी कोई आया क्या? नियर ऑटोमेटा पर 1.8 नियर ऑटोमेटा, ये पता नहीं, देखा नहीं मैंने। नर है, नर ऑटोमेटा का तो गेम भी आया है। अच्छा नर AR थोड़ी है, नहीं आ रहा है ना शायद। VE वर्जन 1.18। अभी ये क्यों मार रहा है भाई, किसके लिए मार रहा है? हाँ वो है ना ये कोई है, मैं उसका नाम भूल गया। वही लिखा है सोर्स वही लिखा है। अच्छा अभिषेक, उस हिसाब से बिल्ड करना कि अपन को कौन से पहले चाहिए कौन से बाद में चाहिए, मतलब जो जरूरी हो उनको पहले बिल्ड करना 4 स्टार में, और टट्टी बाद में, जैसे कुकी शिनोबू वगैरह पहले बिल्ड कर लेना क्योंकि अपनी नायदा के साथ बढ़िया चलेगी। कुकी को ही लगता है वो। और आता हूँ, ये तो यालान को भी लगेगा। इसको कैंडिस को भी करना है। नहीं ये पहले वो दिखाना नीचे, अभी भैया कैरेक्टर दिखाना है, कैरेक्टर्स 4 स्टार ऑल करना जरा, 4 स्टार ऑल। एक मिनट भाई गरीब हो गया मैं भाई, मेरी किताबें खत्म हो गई भैंस की। ओ भाई साहब। हाँ बताओ क्या देखना है इसमें तुमको? भाई किताबें खत्म हो गई भाई। देखो एक ये बिल्ड करना है पहले। क्या है ये रोजारिया? यूंजिन का भी करना है, यूंजिन नहीं है। रोजारिया किसके लिए बिल्ड करना है भाई, किसके लिए? रोजारिया नहीं बिल्ड करना है भाई। क्रेडिट देती किसके ना लिए बिल्ड करना है? नहीं बिल्ड करना है, मैं बोल तो रहा हूँ रोजारिया नहीं बिल्ड करना है। नहीं, क्यों भाई? अगर शैने आ जाएगी तो शैने बिल्ड करेंगे, रोजारिया छोड़ देंगे। नहीं तो रोजारिया को बिल्ड करने से तो सिर्फ लेवल 80 करते, और क्या करना है? नहीं बीच मिल जाएंगी तो 70/80 होंगे ही सारे कैरेक्टर, लेकिन अभी नहीं होंगे ना, अभी पहले 50/60 तो हो जाए सारे पहले। ओके कर ही रहे हो, और क्या है बचा ही क्या है? तो अभी 2-3 अभी काफी बाकी हैं भाई। नहीं सब देखो, सुक्रोस ग्रोथ है नहीं, काजुआ है, इवेंट भी है। नहीं तो जरूरत की बात नहीं है ना, जरूरत की बात थोड़ी ना है। परमानेंट विशेष निकालनी है भाई, जरूरत की बात कौन सी है भाई उसमें? मैं लाइन वाइज मत बता रहा हूँ, फर्स्ट प्रायोरिटी के साथ। भाई टिग्नारी मिलना बचा है बस, मुझे लग रहा है टिग्नारी इस बार मिल जाएगा। बाकी जरा ये अभिषेक G80 क्यों पड़ी नहीं? एक 5 स्टार वो, ये 5 स्टार 90 नहीं, ये कैसे है? उसके लिए मटेरियल एक्स्ट्रा लग रहा है ना, रिसोर्सेज लिमिटेड है। वो 80/90 नहीं क्या मतलब? अरे यार क्या ही HP बची यार इसकी। नहीं तो 90 तो ऐसे ही हो जाता। अब आएगा वो भेड़िया लेके, वो बोल रहा है मोनो जियो क्यों नहीं लेके गया तू, हंस रहा है वो। अकेला पिलर लगा देना नॉर्मली का, लगाया था पिलर उसका। एक एक्सेस और अरे यहाँ तक आया ही नहीं उसका, बहुत धीरे धीरे आ रहा है। मात्र 63,500 मुड़ा है। हो जाएगा ये, हो जाएगा, छोड़ दे, हो जाएगा भाई मेरे, हो जाएगा, इसको छोड़ के आगे निकलना था ना। इतना C2 ओनली है ना भाई, कैसी बातें कर रहा है तू? I mean C1 ओनली है, गरीब आदमी यहाँ पर ओनली C1 निकाल के रखा है। कौन आता हूँ मैं थोड़ी देर में। ठीक है। यूंजिन किधर गई? अच्छा यूंजिन तो लीवे की कैरेक्टर है ना, तो उसको वो होना चाहिए ना, मतलब लीवे से वो होना चाहिए। ये इनाजुमा क्यों या फिर इसने वो लिया? मतलब बॉस में इनाजुमा का लग रहा है। तो बॉस में इनाजुमा का क्यों लग रहा है भाई? वो लीवे की कैरेक्टर है ना, क्योंकि वो इट्टो के साथ आई थी। सॉरी आयाटो के साथ आई थी। किसके साथ आई थी यार? तो उससे थोड़ा ना कोई फर्क पड़ता किसी के साथ आई थी। सॉरी वो याद है आपको?
लास्ट दिसंबर में एक तो आया था, उसके बाद जनवरी में शने शने और ये आए थे। तो मेरे को लग रहा है और कोई बहुत। गोरो को क्या लगता है? गोरो को पता नहीं गोरो कौन सा मटेरियल लगता है? गोरो कौन सा मटेरियल? गोरो को तो इनाजुमा के लगेगा ना। अरे नहीं, कौन बॉस मटेरियल कौन सा? किधर है ये रहा गोरो? ये लगता है मैकेनिकल एरे। तभी। क्या तभी? और कोई है नहीं ना जो पीछे। तो दो ये, एक ये होगा और एक दूसरा फिर गोरो, मतलब सॉरी यूनजिन और इटो को छोड़ कोई लगता ही और किसको लगता ही नहीं है बॉस पे। फिशिल को भी मारना है ये। अब लगे यार क्योंकि मेन कैरेक्टर के मेन वेपन आ ही गए हैं, तो क्राउन, आप क्राउन टैलेंट कर सकते हो। क्या बोलते हाँ ऑस्ट्रेलिया क्या चल रहा है? मेडिटेशन कैसा रहा? ये कब इसने भेजा ये? क्या ये मेरा हिस्ट्री? ये तो कल भेजा था 8/16। क्यों भेजा था? नहीं पता। ज्यादा बजना है इसको। ब्रोंज है इसीलिए। हाँ खुद तो हाइड करके बैठते हैं। इतना शर्म आता है कि अपना हिस्ट्री हाइड करते हैं, दूसरे लोग का हिस्ट्री देखते हैं। ये तो वैलिड भी नहीं था, वो मैच में भी नहीं था। अगर मैच में होता तो मैं ले लेता, चल ब्रॉन्ज मिला कोई नहीं, मैंने तो खराब खेला। वो मैच में ही नहीं है तो ये शेयर करके क्या फायदा? बचना है इनको, मतलब बस ये BXL जैसे बिल्ड बनाना है, मार्केटिंग पे इमेज बनाना है और किसी और का हिस्ट्री शेयर करना है। एटलीस्ट मेरा बिल्ड तो सही था। बजरेश लोग भाई बजते रहेंगे और कुछ नहीं, दिमाग खराब करना है बस सुबह सुबह। मेडिटेशन करो, मेडिटेशन। हाँ मेडिटेशन की बात नहीं है, जब तुम वो मैच में ही नहीं हो तब उसका शेयर करके क्या फायदा? बताओ क्या प्रूव करना चाहते हो? मुंह पे बोलो ना सीधा, क्या बताना चाहते हो? पीठ पे क्यों ये सब मीडिया शेयर करके नाटक कर रहे हो? बस बजरेश भाई एक नूब होता है और एक ये बेअक्कल लोग होते हैं और कुछ नहीं। जो है मुंह पे बोलो ना। मैं वीसी पे रहता हूँ, अनम्यूट रहता हूँ, बात करता हूँ। तुम्हारे ऐसे चुपचाप म्यूट नहीं रहता हूँ मैं। पीठ पीछे काम करने वाले लोगों का ना भाई ऐसे ही सीन है भाई। जो है अच्छा बुरा सब मुंह पे बोलो ना। ये क्या कर रहे हो? मीडिया शेयर कर रहे हो चुपचाप, दिमाग खराब। सुबह सुबह शांति से आता हूँ, ये सब देखना पड़ता है इन येड़े लोगों को। It's so nice to de-stress. Ah. Have you heard about the chasm? ऐसे रेडिंग गलती काउंट किया क्या आपने? नहीं गानी का वो किया है ना? क्या गानियों का बस किया है अभी तक बस। और कौन सा कैरेक्टर है आप पे? इसका उसका वेपन है आप पे? क्या नाम है उसका? उसका कर सकते, यूला की एलटी काउंट कर सकते हो आप। मैं सोच रहा हूँ आयटो का एलिमेंटल स्किल कर दूंगा। कर दो, क्योंकि उसका वेपन भी है ना। मैं सोचता हूँ कि बाकी अभी जी एक ना मुझे मटेरियल चाहिए। मटेरियल तो है। अरे तिगनारी बिल्ड लेवल 50 पड़ा हुआ है। एक तो एनहांसमेंट और कहाँ से फार्म करूं मुझे समझ में नहीं आ रहा। एनहांसमेंट और जाओ ना, इनाजुमा में काफी सारे हैं। मेरे को लग रहा है वेपन 80 रखना पड़ेगा, 90 नहीं करने वाला। नहीं 90 कर लो वेपन।
नहीं होता सपोर्ट्स के वजह से नाहिदा वो डायनो पे सैक्रिफिशियल पड़ा है तो 80 रात में करता जैसे नाहिदा मतलब सॉरी डायनो का ओपन हो गया इन सब के 90 की जरूरत नहीं है 80 और 90 करके छोड़ दिए फिलहाल जब ज्यादा होंगे तो कर देंगे फारूजा मॉडल पे जरूरत है नहीं Are you okay? Did any water... That was scary. Well, greetings, Whoa. My name's Paimon, and this is the Traveler. अरे यार ये क्या हगाए भाई मैंने Just now I... It's alright. क्या हो गया? Next क्या हो गया? as long as you... Yes, ma'am. अरे मैं लॉबी में गया एक्सकैलिबर ने इनवाइट किया और मैंने बाय मिस्टेक ये सीजे और इनसेन को इनवाइट किया फिर देखा तो लॉबी में ये सोलो क्वीन है मसाला मिला नहीं मैं बोला दोनों को भाई बात में करते अबे मैं कोई इनसेन इसने लॉबी इनवाइट किया बे एक्सकैलिबर तो मैंने ज्वाइन किया और दोनों को इनवाइट किया फिर अभी लॉबी देख रहा तो सोलो क्वीन They say it was even in that when he finally came to. Once she saw that my ancestor tried to run after her. In the end, once he returned, after generating the stories, people now say. कहते हैं MMR पुश करवाया क्या? Yes, I want. मैंने अभिषेक भी आपका नाम लगा दिया था. I've spent many क्या years. चीज? क्या आप खेल रहे हो मेरा गाँव? कहाँ पे? अरे कल रात में सोलो किंग जब हम 5 मिनट खेल रहे थे सोलो किंग का मैसेज आया था मेरे को कि MMR पुश करवाया क्या? तो मैंने कह दिया मैं अभिषेक मैं बता दूंगा कि मैं नहीं था अरे बता देना आप क्या कौन इतना लोड है फालतू 10-15 मिनट आने लगे बट गोल्डन हॉर्न 192 हो गया है वे कलेक्ट गोल्डन हॉर्न ये क्या वो है वो ग्लोबल चैट पे काम आता है अच्छा मैं ये सोच रहा कि अभिषेक को नहीं है अपना क्या बोलते हैं वो हॉर्न नहीं होते हैं हिलचल से जो मिलते हैं आपकी वो देख के मेरे पास भी लार्ज हॉर्न बहुत पड़े हैं भाई एमएल में मेरे पास भी बहुत सारे पड़े पूरे पता है उसके पूरे 15 हैं मेरे पास 150 के ऊपर पड़े हैं ये हर चीज में वही कलेक्ट करता हूँ ना मैं क्योंकि बॉर्डर ऑर्डर तो सब है और वो हॉर्न नहीं मिलता वो रेडी नहीं कर रही और ये एक्चुअली वापस भी स्टार्ट कर रहा है Great. I can't मैं wait. निकल जाता है लॉबी से बहुत awkwardness फील हो रहा है The streets are breathtaking. Smiles and laughter everywhere. रोस्टी का मेरा लास्ट गेम देखो It's contagious. कौन सा देखो एक I can रैंक almost जो feel सी the क्लास music in the air. I have the urge to start waving my. रुक मैं ये एंटर वाली लॉबी में अब सीजे नहीं कर रहा एंटर कर दिया अबे खेल रही है वो शायद सॉल्व हो गया उनका डिस्प्यूट वहाँ सब सर्वर बैठे हैं सीजे बैठे हैं No. I mean. सीजे इनसे नाम श्लोक पटेल You mean. वो सब लोग बैठे उधर हाँ 4 लोग बैठे हाँ तो फिर क्या टेंशन खेलने लग गया लगता है What do you say, Mr. But. Are you? Guess my yow yow. Okay, you've got this. कहाँ है भाई ये टैंक अबे ग्लू का है वो अलग ही दिखता है इधर गूगल तो आइकन चेंज कर दिया भाई पता नहीं क्या बना दिया पहले इतना बढ़िया आइकन था किसका हना भी का आइकन उसको देखो क्या बकवास है हना भी का आइकन आइकन मतलब वो कैरेक्टर दिखते नहीं अपन को सिलेक्शन के टाइम जब अपन स्कोरबोर्ड देखते हैं तो दिखता है ना कैरेक्टर का चेहरा वो इतना बड़ा दिखा रहा है पता नहीं क्या है लियो मॉडल तो नेक्स्ट टाइम पिक करते हैं मैं देखूंगा नहीं पिक नहीं तो स्कोरबोर्ड से देख सकते हो जैसे स्कोर वो टॉप पे स्कोरबोर्ड क्लिक करोगे दिख जाएगा Oh, calm down now, dear. I'm not about to run off anywhere. I'm not a bundle of energy. I haven't seen you in days, Master. Miss you. ग्लू तो बहुत मजेदार लगता है भाई खेलने Oh, bless you, yeah. कुछ करना ही नहीं है फर्स्ट किल मारो फिर जाओ फर्स्ट किल के पास फर्स्ट किल मारो फर्स्ट किल के पास जाओ Hello, man. एनिमी स्टन और तुम्हें थोड़ा सा हील भी मिलता है Oh, right. You're an elder of, for example. Why not at all? Times change, and so. Here. Goodness. Master. अभिषेक भैया
बोलो। ट्रैवलर C6 कैसे होगा? देखो उसमें क्या कहते हैं, मेरे ख्याल से स्टैचू को लेवल अप करने पे होगा, उसका कंसेशन मिलेगा। देखो स्टैचू पे, क्योंकि उसके अलावा क्या कहते हैं, वरना तो उससे मिला था क्वेस्ट से, आर्कॉन क्वेस्ट, लेकिन आर्कॉन क्वेस्ट में तो सारे कंप्लीट हो चुके हैं ना, तो मेरे ख्याल से स्टैचू पे ही है जो भी होगा। Next on the agenda. And when you meet with the Ministry of Civil Affairs, please remind. Understood, Miss Guy. Every point of velocity is a place. Elemental mass से डैमेज बढ़ता है भाई ट्रैवलर का। What brings you here? अभिषेक भैया पता नहीं, उसकी पैसे देखो ना, जैसी नाहिदा की पैसे वैसी इसकी, पढ़ो एक बार। सही है फिर। हर एलिमेंट मास्टर के पॉइंट पे मतलब 0.15 डैमेज बढ़ेगा एलिमेंटल स्किल का, और 0.1 बढ़ेगा उसका। I don't. फोन आ रहा है, उठा ले। It's definitely an ambitious plan. If there's anything you didn't quite catch, Paimon's more than... Oh? Well, the iridescence, it would be quite... Therefore, some live music will certainly add to the festive Yes. Now I just need to take some... As long as I... Mr. Dvorak. Oh, yes, sir. As soon as there's... I couldn't agree. Master wants... I'm gonna take it... Wow. Hey, Yo-Yo, can you... apart from Lotus, anything sweet. No, this... Perfect. Oh, perfect timing. We were not at all. Yao Yao. Remember to make tea. Okay. Everyone, I'm sure... Thank you, Yao. We should go get... Rest and rebuild. यश हाँ, मतलब 1 2 3 4 5 6। अभिषेक भी है, बताओ क्या बताऊं? एलिमेंटल मास्टरी का 1% डैमेज बढ़े। मैम जाने वाला है, आ जाओ। वो आप यूज करते हो क्या? क्या? डेंटो ट्रैवलर? नहीं मत। डेंटो ट्रैवलर का डैमेज काफी आता है भाई। बढ़िया है। नहीं, अल्टी का ये भी बहुत है, वो अच्छा। नहीं तो उसमें हाइड्रो से कर दोगे ना तो काफी ज्यादा बढ़ जाता है। नहीं, और उसमें कंटीन्यूअस मतलब क्या वो रिएक्शन प्रॉक होते रहते हैं, कुछ और होता है? अरे वो डेंड्रो डैमेज देता रहता है, वो गानियों की अल्ट की तरह है। अच्छा, फिर तो काफी अच्छा। बस पायरो में दिक्कत है, पायरो और जो इसका इलेक्ट्रो वाला है ना रिएक्शन, मतलब जो इलेक्ट्रो वाला जो ट्रैवलर है और डेंड्रो ट्रैवलर दोनों सेम है। किस टाइप में? स्किल में। क्या अभी छोटू अकाउंट? हेलो। क्या? स्किल में दोनों का ई सेम है, दोनों का क्यू सेम है। अच्छा, ये छोटू अकाउंट भी तुमने तब बनाया था क्यों? छोटा अकाउंट मैं उसमें लॉगिन कर रहा हूँ पैड में, क्योंकि वो मारना है ना मुझे बॉस। ओके। बस सोलो क्वीन के आईडी से एक्सकैलिबर कोई और खेल रहा है क्या? क्या पता भाई। नहीं, फैनी बहुत अच्छा खेल रही है। एक्सकैलिबर को फैनी कहाँ आता है खेलना मेरे ख्याल से। अरे सोलो क्वीन सोमा के उसमें हो गया क्या? नहीं सोलो क्वीन खेल रही है फैनी बहुत अच्छा। क्लासिक है क्या? रैंक है? हाँ क्लासिक। सी क्लासिक। तो प्रैक्टिस कर रही होगी। इनसेन तो नहीं खेल रहे? नहीं
हम दोनों का तो झगड़ा वगड़ा है कुछ। क्योंकि बीसी पे चारों बैठे हुए हैं ना तभी। इंसेन। पूछ लेना जा करके कौन खेल रहा है भाई फैनी इतना बढ़िया। जा चलो पूछ के आ जा। पूछना कि क्या फुद्दूगिरी चल रही है तुम लोगों की। सोमा ने बोला सोमा हमको भर दिया जाएगा। तो सही है भाई, तो उसी को मारवाने के लिए इंतजाम कर ले। वल्ला सोमा क्या फुद्दूगिरी चले जा रही है इधर, कुछ और काम धंधा नहीं है। तो गया था भाई उस दिन, सीजे आया उसने गालियां देना चालू करी, मैं आ गया। मैंने बोला भाई मेरे को नहीं सुनना है सब कैंसर बाज। यहाँ पीसफुल माहौल रहता है, ऐसे एलिमेंट से दूर रहो। Next on the agenda. Next on the agenda. काया थोड़ी हो बे नूबड़े। अब तो पहुंच ही जाएगा। कल मैं यहीं पे डूब गया था, मुझे याद है। हाँ मुझे भी याद है। अबे क्लेम कैसे करेगा, उसको दर से लेके आना। हाँ ले आऊंगा ना, उसमें क्या। वाह भाई 2 शॉट में बेचारा पिल गया, कैसे मजाक कर रहे हो। मतलब वो हाइपोस्ट है, उसकी कोई वैल्यू है कि नहीं? नहीं है भाई, पुराने वाले की तो कोई वैल्यू नहीं है। पुराने वाले तो बस देखने वाले हैं। लो भाई दिखाई दे रहे हैं, काम चले जा रहा है। Osmanthus wine tastes the same as I remember. But where are those who share the memory? Where do you want to go next? If you'd like to see Liyue's tourist spots, I have a few references. चैट में सो रही है भाई। चैट मिस कर रहा है तू। अरे मैं उससे आईपैड से रहा था, चैट थोड़ा सा साइड में हो जाता है। हाँ भाई रिपर, हाँ हेलो हेलो। भाई शाउट आउट दो भाई, ये हेलो हेलो क्या कर रहे हो आप? हाँ भाई शाउट आउट। Boats are made for transferring commodities back and forth. And those across Liyue. So it is where many things come to settle. क्या? सोलो की नहीं खेल रही। तो पूछने गया क्या? मैं ऐसे ही बोला कौन खेल रहा है इतना अच्छा। अरे ऐसा थोड़ी डायरेक्ट थोड़ी पूछने गया था। तुझे कैसे पता लगा? कैसे पता लगा ये खेल रहा है एक्सकैलिबर? क्या है क्लासिक? कौन-कौन खेल रहा है? क्या तो सोलो क्वीन है, सीजे हैं, क्या खेलते हैं? हीरो? बस उन्हें हीरो बताया था बस समझ में। क्या सोलो क्वीन और सीजे साथ में खेल रहा है? अरे क्या इंसेन भी खेल रहा है, सीजे अकेला नहीं। भाई इन लोगों की पॉलिसीज, भाई इन लोगों के प्रिंसिपल्स ऐसे चेंज होते हैं जैसे कपड़े हो भाई। जब भी सीजन में बोला था कुछ भी हो जाए जिंदगी में मैं उसके साथ कभी नहीं खेलूंगा, ऐसा बोला था सीजन में। कुछ भी होता है भाई।
चलो अपन क्लासिक खेलते हैं, मतलब आई मीन रैंक खेलते हैं। रुक जाओ, मेरा खत्म हो जाएगा ये मैच, उसके बाद आता हूँ मैं भी। वही हर्षी बताया था, दुखदा कॉल कर गए Osmanthus सुबह से wine इसलिए tastes रैंक the खा रहा same है। as I remember. तभी क्लासिक नहीं, चल रहा हारने की बात नहीं है रे, नहीं वो नहीं बता रहा। कैसे कैसे खेल रहे ना वो दिक्कत है। वो हारते तो मतलब अपने लिए है ना, ये वाला मेरे को गुस्सा अलग ही आता है भाई, जब बचते ना लोग तब मेरा दिमाग खराब होता है भाई। जोसेफ कौन बज रहा था भाई? अरे मंदार में, अच्छा वो जो मेरे को वो ये मिला था ना मैच, क्या बोलते हैं जिसमें हम लोग हारे थे। कल वो वाला गेम जिसमें हाँ, रस्टीना तो वो तो मेरे को पता ही था, मैंने गलत पिक किया तो हार गए। और इस उस मैच में ये था भी नहीं जो ये हिस्ट्री शेयर कर रहा है कल रात को शायद। मैंने फिर देखा इसका हिस्ट्री देखा, खुद का तो हाइड रहता है। अरे तो वो तो ये वो बच थोड़ी रहा था, वो तो ये अभिषेक मजे ले रहा था ना, अभिषेक अरे और तो वही सोनू। ना, मजे ले रहा था, तो ये थोड़ी ना बोट में चढ़ जाएगा सीधा। अरे इसी की स्ट्रीम देख रहे थे ना ये लोग, एमडी तो हिस्ट्री दिखा रहा था तेरी, और कौन दिखा सकता है? ये लोग थोड़े ना मैच में थे उस टाइम पे। नहीं नहीं, स्ट्रीम दिखाना अलग होता है और फिर मीडिया शेयर में डालना अलग होता है ना। मैं ये नहीं बोल रहा तुम दिखाओ, डालने पर बोला ये था इन लोगों ने, क्या बोलेंगे? मैंने अगर चार्जर तुम क्यों ऐसे नहीं लिया? ऐसे डाल रहे तो ऑफ कोर्स है ना उसका तो मतलब, उसको मारो भाई, कितना बच भाग रहा है। पता होगा तितली कलेक्ट कर ली थी, मजा नहीं आता। अगर नाहिदा के ई से तितली कलेक्ट हो जाती। अरे बढ़िया रहता मजा भाई तब। दूर से बस तितली अच्छा एक बात बताओ सोमा, हाँ अगर मैं क्रायो राजेश वाइन को गानियों से मारूंगा तो मरेगा? हाँ मर जाए। कितना कितना टाइम लगेगा? डिपेंड करता है डैमेज कितना, मैंने को देखा नहीं उसका। मैं ये वाला कर रहा हूँ ना, ये वर्ल्ड लेवल कुछ 3-4 है शायद इसका, 3-4 या 2 के आसपास। मार दोगे पर वो ये देखो, पर पहले वो तो तोड़ देना शील्ड। आओ ऐसे ही मर जाए। नहीं जरूरत नहीं है, जरूरत नहीं है। ये अपनी एडे मारते तो रुला देता हूँ। वीएस नहीं है, वीएस ना है लिखा। वीएस है इस वाले वर्ल्ड लेवल पे तो बस ऐसा है, 2 है वर्ल्ड लेवल। बस इम्यून ना हो बस, वो मर जाएगा। इम्यून भी होगा तो भी मर ही जाएगा, और क्या नॉर्मल अटैक मारते रहो। बोलो सोमा नूब, क्या कर रहे हो? जॉब पे हो? क्यों? ऐसे ही। पे आ जाओ, एक चेस हो जाए। आज नहीं हो पाएगा सोमा। कल हो पाएगा सोमा, कल आना सोमा, कल। नहीं, दूसरी साइड पे पीसी नहीं है। ओह तो मोबाइल में खेलना। मोबाइल में खेल लो। वो चार्जिंग कम हो गया। नहीं चार्जर नहीं लेके गए? कौन मोबाइल पे स्क्रीन पे कौन वो आंख फोड़े। ये बात तो तुमने बिल्कुल सही बोला। जैक भी आपका कौन सा फोन है? आईफोन कौन सा? 13 प्रो। 13 प्रो है। 13 पीरो है, पीरो। अरे यार कहाँ भाई, चार्जर ही नहीं मिल रही। क्या किया जाए भाई रिपर। और सोमा अल हकीम निकाला या नहीं? सोमा ने निकाल लिया अल होमा निकालेंगे अपन। क्या जाफा होमा? होमा निकालोगे तुमको वो बोल मिलने वाला है। शांगलिंग को देंगे। तुमको बोल मिलने वाला है। वो भी अच्छा है, वो मिल जाए तो वो मैं चाइल्ड को दूंगा। सॉरी यार को तो वही तेरे पास एलन है? हाँ एलन है ना। वाह भाई, कब निकाली एलन? कुछ नहीं, C6 बार करने गए थे और एक नया 5 स्टार मिल गया। C6 बार करने गए थे? हाँ लेकिन बार C6 नहीं हुई थी, एक 5 स्टार नया आ गया था और यही था वो 5 स्टार एलन। सही है भाई। मिल गया चार्जर मिल गया।
येलन पे कर लिए मुझे Will भी। we really be off work this early? कब खेल रहे हो सामन? There is still a lot left पता to नहीं। do. सोमा बोले तो लेऊंगा। सोमा लेनी चाहिए नहीं ये ला। निकालो अभी ये तुम बोलोगे तभी निकालेंगे। हुताओ के साथ चलाएंगे ना, हुताओ के साथ। हुताओ क्या चलानी है, ठीक है। कब खत्म हो रहा है तेरा गेंशिन वैसे? के बाद तो खेल पाएंगे। होगा लगभग आधे घंटे में। पर शिंक्यू का क्या करे सोमा? आधा घंटे क्यों लगेंगे भाई? ऐसा क्या कर रहा है तू कि आधा घंटा लगेगा गेंशिन में? शिंक्यू रेटिंग से चलाएंगे। ओ ऐसा ठीक है, यही सही है। ऐसा तुम बोलो सोमा। तुमने मना थोड़ी कर सकते हैं। बस एक रेटिंग निकाली जाए। क्या बोलते रेटिंग तो है क्या बोलते? जलाल आपके सेट भी तो होगा ना फिर उसका? हाँ होगा ही। 4 पीस एम्बलम लगेगा। ये लान वेपन में वेपन में 4 पीस एम्बलम लगेगा। वाह समा। वेपन में कौन सा है? वो है 7 years war या फिर क्या है? हां 4 years भी है। झाड़ू मार ले। वो लगाते हैं अपने, क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? 20 वाला वो 4 स्टार वाला है ना, स्ट्रिंगलेस। क्या बोलते हो? स्ट्रिंगलेस लगा सकते, पर अगर 4 पीस एम्बलम लगाओ तो एनर्जी चाहिए होगा ना। वो है फेडिंग टॉयलेट करके देखो, फेडिंग टॉयलेट करके। कौन सा है? अरे वो एक मिला था ना, एक एनर्जी रिचार्ज का वो हम लोग को R5 जो करने पे मिला था वो। हाँ R5 वाला। हाँ वो है वो क्या कुछ अटैक बढ़ाता है ना। हाँ अगर वो ऑफ फील्ड भी रहेगा ना तो भी वो डैमेज बढ़ाता जाता है अगर तुम डैमेज करते हो उस कैरेक्टर से तो। और ये लान करती भी है साथ में वो डैमेज। ऑफ फील्ड रहने पे भी वो डैमेज बढ़ाता है। मतलब अगर आप कैरेक्टर ऑफ फील्ड नहीं, पता ऑफ फील्ड तो भी बढ़ेगा। कब आ रहा है भाई ये लान का बैनर? कब आ रहा है? अभी 7 या 8 7 या 8 को। हाँ अल-हकीम निकाला क्या किसी ने? हाँ सोमा ने निकाला, पर अभी तक खास कर तो बता रहा हूँ है कि नहीं वही की बात। निकाला तो है। चलो ये हो चुका है। मेरे दोस्त को अल-हकीम की स्वॉर्ड मिली है, वो अल-हकीम निकालने वाला है। सही है, सही है ना सोमा? वही तो भैया चाहिए बस अल-हकीम की स्वॉर्ड। ले लो। कैसे निकाले? विश ही नहीं है। ये भी सही है। वो यस उठाओ उठाओ बस पेपर लाना। तो ये क्या बोलते हैं, सोलो क्वीन अपोजिट में है तुम्हारे? हाँ सोलो क्वीन ओपोनेंट में। क्लिक करो ओके। वीसी पे तो इधर है ये, ऐसा क्यों? उसको मारेंगे भाई तो वो क्लासिक प्लेयर है। नो क्लासिक प्लेयर। ओए टेक क्या नाम इसका? क्या नाम? इनसेन। मैं हूँ इनसेन। मैं खेल रहा हूँ कहाँ रश अभी? मैं खेल। अच्छा तू खेल रहा है, ओके। मेरे को लगा रोयस का खेल रहा है। गई भाग गई, सोलो क्वीन भाग गई यहाँ से, अभी यहीं बैठी थी। इनको मारना ये है ना जो रश भी है पूरा गेम काटना लगभग 100 बार मारना है, ठीक है बस। कौन है वो? कार्मिला को नहीं आंदा, सोलो क्वीन का आंदा। अरे वो नहीं है री करके जो पहले रश अभिषेक। अरे पता है ये जो बीटी के साथ खेलते मैं जानता नहीं है ना उसको। इसको सोलो क्वीन को मार सकते हैं, उसको क्या करेगा मार के? अरे मारो ची का क्या ही करोगे? सोमा की कुछ दुश्मनी है कार्मिला से, है ना?
भाई ये भाई आ रही है जा रही है बार बार। चलो कोई उसको पता नहीं था क्या हम लोग के ओपोनेंट में। मेरा बिल्ली तो भाई फेमस हो गया अभी सब जगह। अरे बिल्ली फेमस है आपका। बिल्ली चूहे के नाम से फेमस है, पता है आपको? अरे भाई जो भी मिलता है बिल्ली बिल्ली करता रहता है। बिल्ली को मारा भाई इसने। चल जाएगा। फिर उसने स्टार्ट भी किया। उसको लगता है उसको हम लोग को मारना है एक्चुअली। समझ रहे? क्या होता है? मुझे लग रहा है उसने स्नाइप किया है भाई। पिंग नहीं आई। हाँ अरे भाई ये कौन सा सर्वर है? बंगाल बंगाल लग रहा है मेरे को तो। पिंग भाई छी 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 पिंग। काइकू ये सर्वर में ये कितना स्लो चलता है इसमें मूवमेंट। डिले है रे थोड़ा अटैक स्पीड में अगर नोटिस करेंगे तो। कौन जीतेगा क्या लगता है सुनो? कौन जीतेगा? जिसकी में लेंगे वीडियो जीतेगी। देखो क्लाउड दिया लेकिन लेट गेम टफ है यार। क्लाउड प्यूरीफाई पे खेल रहा है और गूशर वन शॉट कर रहा है। मैं गूशन को टारगेट करूंगा कोई नहीं। Everything's ready. Everything's ready. Let's go. Hello, nice to meet you. लगाओ छलांग लगाओ डायरेक्ट जाओ। मैं देख रहा था कि कोई आएगा क्या नहीं। रुक जा रुक जा रुक जा रुक जा रुक जा रुक जा। ये सब आ रहे मिडिल प्लेयर भी नहीं है। कोई दिक्कत नहीं हो तो कोई है नहीं भाई ये लोग ये चलो नाइस। इसका मतलब फ्यूचर में खेलना भी नहीं उसके साथ। मेरे को ऐसा लग रहा है। ये कौन है? चाओ चाओ कौन? अरे क्या है ये अटक क्यों जाता है? अबे निकल जा तू। ये कौन है? चाओ रैंडम होगा। रैंडम है रैंडम। मतलब सीजे भाई खेल कौन रहा है? समाज खोल रहा है रोस्टा खेल रहा है? मैं घंटा मेरे पास तो वही नहीं है। आप देखो जैक भैया मैं रोस्टिया के टीम व्यूअर से खेल रहा हूँ। रोस्टिया बेट टॉकर बनाओ ना। क्या बना? मैं वो पे जा रहा हूँ ग्रेड जा रहा हूँ। बेट टॉकर कंप्लीट कर लेते हैं। वो फार्मिंग काम आता है कि नहीं जैक भैया? पता नहीं। पहले चलो भाई ए पकड़ इसको। रुक रुक रुक। मुंह क्यों दिखाया? मेरा दिख गया। अल्ट नहीं है मेरे पास। नहीं मैं मस्ती कर रहा हूँ। चढ़े अंदर बेस मारो घुस के मारो। अरे अल्ट नहीं है। हाँ वेव प्ले करो। जॉनसन आ रहा है रुक जा। आप मार दो। अरे भैंस क्यों? फर्स्ट किल ही नहीं हो गया भाई। मैं गलती किया। माय बैड अरे गया कि वही वो नाइस वन चला ही नहीं। नाइस वन। ऐसे थोड़ी ना मारेगा। नहीं मैंने ये किया गलती किया। मैं फर्स्ट किल क्लिक ही नहीं किया उधर। सेकंड स्किल क्लिक कर रहा था फर्स्ट किल के लिए। और मेरा ही गलती था। कोई नहीं मार्क्स में प्रेशर था। अबे तू लेन दे क्या है इसको दिक्कत? उसका जीवन दुखी है। मारो भाई। अरे मतलब जाने का मतलब नहीं मर जाओगे। फार्म कर लो। भाई पिंग भाई फिर भी नहीं मार पाए। मार्क्समैन को मारना पड़ता है। लॉर्ड
हो रहा है टर्टल। नहीं छोड़ दे लॉर्ड वाला छोड़ दे, मेरे रेट्री भी नहीं है। टर्टल आजा आजा आजा। हाँ नहीं है, रेट्री भी नहीं है, मैं कॉल दिया हूँ, नहीं कर सकता। हेल्थ भी नहीं है, अल्टी भी नहीं है। ऊपर वाला क्रीप फार्म कर लो, एचपी आ जाएगी। भाई अरे गया। छोड़ दो भाई, मैं बोल दिया हूँ, छोड़ दो। करना है एग्रेसिव। कौन है सीजे? स्पैम कर रहा है। अरे यार ये सेकंड्स के लिए दब रहा था। क्या कर रहे हो? दुख बेचारा सोमा हरवाएगा तुमको। अरे भैंस के अपन फीड कर रहे हो उनको। चल सही। ये मैं अभी फार्म कर रहा हूँ। बेवजह फाइट मत करना, जब कॉल दे रहा हो तो बैक ऑफ कर दे। हाँ क्या नाम है इनसेन? अबे यार ये चाव गया गया। टर्टल आ रहा है 7 सेकंड में, बफ आ रहा है मेरा। लेन जाना, बॉटम जाना। मेरे को लग रहा है तुम्हारे नहीं रुक जा। हालात बुरे चल रहे हैं अभी। लेंगे आए लेट गेम हीरो यार, मत अर्ली गेम देख रहे हो। हाँ जैक भैया बॉल टॉप गया भाई। कौन है? इसी सिचुएशन से बोल रहा हूँ। आएगा कोई सिचुएशन सही कह रहा है, पर अगर वो नहीं आ सकते। लेकिन वैसे इनकी टीम वैसी है ना, अगर एक एंगेज अगर दे दिया तो टीम कर सकते सामने। एओई डैमेज बहुत है। इनकी स्ट्रीम बड़ी हो गई ना। गया भाई ये। हो गई कल जब मैं कर तब भी हुआ था कैसा? धर एमएम को धर। सबके एंड्रॉइड में तो रश भी किस में हो रहा है? सबके में होता है। एंड्रॉइड में डिस्कॉर्ड नहीं चलता है, ऐसे ही कंपैटिबल नहीं रखता। अरे रास्ता स्क्रीन जूम आउट करना अपने साइड से। मत करियो एंगेज, फार्म कर। थोड़ा सा पिंच कर देना बस। आओ ना। हाँ हो गया। रुको मत कर, मैं बता रहा हूँ सामने से लो लेंगे। हाँ मारो। एक अल्टी मारा है भाई इसने। As promised. He certainly. तो टर्टल पे ध्यान दे। टर्टल फोकस करना, रिट्रीव मारना है आपको। बढ़िया। फार्म पे रिट्रीव नहीं है। सब तो क्लाउड गया, क्लाउड घुसा है तेरा। नहीं अरे इसका ब्लू आ रहा है रास्ता का। ब्लू भी चला जाएगा, ये भी चला जाएगा। नहीं क्यों सेकंड किल करना था, फर्स्ट किल क्यों करता हूँ? गलत किल क्यों कर रहा हूँ यार? नहीं अबे क्लाउड अपना ही प्लेयर ले रहा है सब भाई। हक दिया भाई इसने। ज्यादा अंदर नहीं आते। मैंने बोला था ना सोमा। इनकी टीम में हग रहे हैं। Allow me to introduce Mr. Zhong Li, consultant Wong, and we the two. It is an क्या करेगा? बाप तो चला गया। गया। नहीं मरा, बच गया। Did you the Fatui could be many such people friends? They are. Because I. What? Don't be so surprised. Rex Lapis may be the prime of Adepti, इनका गुस्सेन तो but he is ultimately an Adeptus. The times have changed. You must have felt it too when you were at Jueun Cost. हमारा कॉर्ड फार्म है लेकिन कुछ कर नहीं रहा। As you have been years past, deicide traveler. काम तो कर रहा है। Indeed, the Qian. Precisely. काम तो कर रहा है तुम्हारे जंगल If we are मरने का बस ज्यादा फर्क नहीं। All right. ये You can go. प्लेयर किसने यूज करी और क्यों करी? चिंगारी। अरे बुश
अबे बच गया मैं। तो फार्म करना। वो आ रहा है मेरा। पीछे जा पीछे जा। वो आ रहा है उनका फैन को। क्या बोलते हो जॉनसन? गाड़ी। तेरे बफ पे आएंगे शायद। नहीं ले लिया मैंने। ठोक देता है इसको। बोल रहा हूँ तेरे बफ पे experienced आएंगे the आ land गया। of but I organize Liu फार्म Ningguang. करो उसका। I टॉप need बॉट। टॉप पे देख वो मॉस्को अकेला दिखा। these are well then. यार ये अकेला नहीं है वो, ध्यान रखना। मॉस्को अकेला था, वो भाग गया। नहीं वो अकेला नहीं है, लेकिन उसके साथ में एक और कोई है जो छुपा हुआ घूम रहा है। हाँ ये कार्मेला है ना, यही तो मैं बोल रहा हूँ, वो री और वो साथ में घूम रहे हैं। कौन मॉस्को? वो मर गई ना 2 बार सोलो, तो वो उसने उसको बुला लिया था अपने पास। निकल जाओ निकल। भाग जा। भाग ले भाग ले। हाँ निकल रहा Not हूँ to Lucas. Radiant. टीम हार गई किसी को। What do you think? नहीं मरा। Oh, थोड़ी if it मारेगा। were me, I'll take them all, boss. रेड ले रहा है। अपनी टीम भाई। अच्छा Oh, तो कुछ अलग ही it is चल रहा as है। you say. If one must almost नहीं मर Immortality गया। बना है तेरे को valley immortality। only after if you return. But there is a fool. मेरे रेड पे ब्लू पे रहेंगे। मैजिकल डिफेंस बनाना Not to उनका Lucas अच्छा ना Jade of excellent. I मैजिक तीन बहुत है शायद। कौन है? Burn them. कर्मिला How about this? don't worry. है। तो रेडियंट बेटर है ना। ये लिंक खुशी है ना तो उसके It can't be. नहीं हाँ हो तो जाएगा। रेडियंट एचपी भी देगा ना ज्यादा। ये मत भाग जा। क्या बोल अरे गया। अरे भाग। कितना स्टन अरे भाई। अल्टी के बाद फॉलो अप तो दिया कर, तू शॉट्स कलेक्ट ही नहीं करता। अरे नहीं मेरे को निकलना था, एक शॉट लेके निकलना था। नहीं यार नहीं खेलना था लिंक इनके। तुम लोग हार जाओगे बता और रहा वो हूँ। अभी आएगी वीसी पे बैठ के सुनती रहेगी दुख दर्द। It has देखो been a long time. गूंगी है, बोल तो पाएगी नहीं। अपना टीम क्या कर रहा है भाई? ये अरोरा का फार्म इतना गंदा क्यों है भाई? A friend of mine from Mondstadt भाई क्या would किया always इसने? bring a few bottles of locally brewed dandelion. खाली है उसने, उसका बिल्ड दिखाई जरा, Came to visit. बिल्ड इतना दिखाई फार्म किया है जरा। उसने। It must be said. भाई that सेम the बिल्ड है, famed एम्पोर वाला the बिल्ड है land of मॉस्को। pastorals नहीं अच्छा मैंने भी ट्राई किया था। are better than Sumeru's frigid snake. ये अभिषेक ही कल रो रहा था कि क्या एम्पोर में टट्टी टट्टी बिल्ड ले आते हैं और फलाना ढिमाका। हार गए क्या? लॉर्ड ले रहे हार रहे हार जाएंगे मेरे हिसाब से तो। You give, you receive. भाई बदला भाई, स्वीट रिवेंज। भाई अल्टीमेट मैंने दिया भाई रिवेंज इज स्वीट। It looks like the Electros are still using it. अच्छा खेला क्या भाई क्या रोस्ट क्या लिया भाई तुमने? गलती क्या लिए मैंने गलती कुछ भी वो तो ठीक ही खेल रहा है, बाकी प्लेयर्स को देखो ना, वो तो सही खेल रहा है। चाहो तो हक भी है तुम्हारा 2-6 पर हमारा एमएम तो भाई मतलब गॉड लेवल खत्म। उसका डैमेज ही नहीं आ रहा रे। कहाँ जा रहा है? बचा था फिर भी उसको मरने जाना है। वाह भाई ये क्या था? We're ready to go. Use pyro. Mr. Zhongli said that the shinier. बदला चले गए। भाग ले भाई भाग ले। भाई खत्म, उनका टीम फार्म हो गया रे। रिवेंज इज स्वीट। नाइस भाई भाग ले मैं फार्म हो गया, इनका हैरिस खेल रहा है। यार क्या गंदा, इतना गंदा। पहले वीसी बैठ के बोल रहे हैं री को मारना है, सोलो क्वीन को मारना है। इतना गंदा और ये क्या है? तोबा। ई भाई क्या हो गया?
क्या हो गया सोमा ये तो? तौबा था भाई, क्या खेले झंडा आ क्या रहे ही खेले हैं टीम भाई। सही है। वो देखो वो ये डिलीट करना पड़ेगा मेरे को जल्दी है, मैं डिलीट करना पड़ेगा। मैं खेलता हूँ अच्छा। रोशन मेडिटेशन करना चालू। भाई डिलीट मार भाई, तू एमएल डिलीट मार। ये रिवेंज मेरे भाई रिवेंज। करियर का डाउनफॉल है। तू डिलीट कर। हाँ? मार्टिस वार्टिस खिलाता तो ओपी रहता, पता नहीं क्या खिला रहा तू भी। ये चोमा का आवाज आया ना क्यों कानों बात में। सुनता है, उसकी बात क्यों सुनता है तू, मेरे को पता। उसको हारना है इसीलिए सुनता है। यार लिंक तो ये लेकिन क्या बोला है? था यार। मजे लेकिन पिंग तो आनी चाहिए, पता है ना इस बार पिंग कैसी चल रही है। अबे पर अपने में अपने को बंगाल सर्वर कैसे मिला, मेरे को समझ में नहीं भाई आया। मिल जाता है, क्या करे। कैसे है मुंबई वाले? ओहो 86। ट्रेल इफेक्ट मिल गया ना तेरे को? ये भाई खूब मैं सोच रहा 100 होता तो मजा आ जाता वैसे सीन। क्या 100 में क्या होता? No problem. 100 में वो मिलता ना, एक चैट है बहुत मस्त वाली। हाँ तो कर ले और क्या। नहीं होगा ना, 100 नहीं होगा। थोड़ा डायमंड ही तो खर्च करना है। हाँ वही है ना। My apology. कितना 88 हो गया यार, हो सकता है 12 लेवल बढ़ाना है। सोचना पड़ेगा क्या करना है। ये क्या है? गेम डिलीट कर पहले, कुछ मत कर। मेरे वो चेस्ट खोलना ऊपर वाला। रोशन 100 में क्या मिल रहा है वैसे? क्या बोल रहा है? 100 में कुछ मिल रहा है क्या? अरे वो मस्त चैट मिल रहा है, ये चैट बोर्ड मेरे को बहुत तगड़ा लग रहा है तो आप कैसे? तुम सोचो मत, सीधा गेम डिलीट। वो यहीं थी सब सुन रही थी भाई, क्यों टाइप कर रहा था? यही है मतलब। ठीक है यार। नहीं कब इतना गंदा खेलने लग गया मैं। रोशन रिटायरमेंट का समय आ गया। नहीं भाई रुक, मैं प्रैक्टिस करने जा रहा हूँ। इतना गंदा मेडिटेशन लगेगा। क्या बोल रहा है? प्रैक्टिस वाला भी नहीं लगा, मेडिटेशन कैसे करना भी पड़ेगा। प्लेयर को भाई मैं कैसे सिखाऊं? क्यों मेडिटेशन? अब मेडिटेशन ओह बूस्ट मिल गया मेरे को, We can leave the मोरल gym बूस्ट मिल here. गया मेरे को, अब मैं खेलूंगा। Yes. Guess we can't do anything else. Yes. I have already. That's right. But when something this, although with the also. Traditionally, one must think that they already have someone in. एक बात बता, जब से लिंक कलेक्टर आई तो एक भी मत जीता है? नहीं भाई ये लिंक कलेक्टर ही भाई स्किन ही गंदा है, लिटरली स्किन गंदा है। जब से स्किन आया ना तब से आ रही रहा हूँ मैं, तब से ही आ रहा हूँ भाई, ये स्किन ही गंदा है। इतनी अच्छी स्किन है, कहाँ स्किन का बदनाम? अरे भाई ये स्किन का ही दोष है भाई, कलेक्टर दोष है मेरे को। अभी सब फ्री चल रहा है। भाई ये सब स्टारलाइट ऑरलाइट आते क्यों नहीं है भाई स्टारलाइट शॉप में? क्या टाइम से है ये स्किन? You two must be his servants. Please. भाई क्या टीम है भाई ये, इनका ओपोनेंट का क्या है ये भाई? Lastly, silk. Wow. I possess but a इतना smattering गंदा। of trivial knowledge. Maddie. I'll take them all. How can I ये put तो है भाई, देखो like तो several फुटवियस तो है ही है। रैंक खेल रहे? रैंक नहीं दे क्लासिक, Gosh, it would be. सोलो क्लासिक में दर्द बहुत ज्यादा मिलता है, इसलिए Thank you. प्रूव करूंगा मैं अपने आप को आता है या नहीं मेरे को ये हीरो। नहीं नहीं अभी तो देखा है लास्ट मैच में। Ideally, with the help. अबे तो भैंस गैंग में क्या कर सकता था वो, कितना भाई वो मॉस्को को तो मैंने अल्टी बल्टी सल्टी सब मार दिया था, वो फिर भी उसने मार दिया मेरे को गणेश में। इसमें क्या कर सकता था मैं? इजी था, हमारा सीजन नूब था। तो तूने क्यों टैंक किया नुबड़े? भाई एमवीपी था,
कोई मत तो बोलना। क्या हुआ जब तुझे पता था कि सीजे हक देगा तो तूने मेरे टैंक को क्यों क्या किया? मालूम हुआ नो कि बड़े उसको करने देता प्रैंक को। मेरे को क्या मालूम। अरे उसको उसने पिक कर लिया था, टैंक ही बाकी था तू तभी मैं ले लिया। तू बेट्रिक्स कर रहा होता तो ज्यादा खत्म। अच्छा होता। अगर अपन दो भी रहते ना, कोई रैंडम तीसरा मिल जाता तो मजा आ जाता। ऐसा सीन था वो मैच। ऐसा तो लगता मैं है पता है, इस टाइम सीजे जो को भी अरोरा मेरे को खेलने मार नहीं रही थी तो आता। यहाँ पे अरोरा आई जो सीजे खेल रहे थे। नहीं नहीं, कहाँ आता है। ये क्या पिंग स्पाइक हो रहा है भाई इतना गंदा। 200 जा रहा है। ये लॉबी से कोई निकला या मेरा अटक रहा है नेट? कोई आया गया फिर आया। तो ये क्यों इतना स्पाइक क्यों हो रहा है? क्या सीन है? नेट नहीं चल रहा क्या? चुप बे। भाई क्या नेट है भाई? क्यों क्यों दब दे? भाई 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 प्लीज एक गेम अच्छा चल जाए। मेरा भी 48%। नहीं 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 नहीं। भाई इधर पूरी टीम है। I stopped. Oh, it's not that kind. Do I look? Well, Paimon. Now that you mention, oh, in fact, एक सेकंड, ये क्या लगा होगा? no. Anyway, The fortune tell. Thanks, Lon. नहीं भाई, रिस्की है। स्पीड मत करो। Speed of light. Hey! कुछ करता है। We've come to ask you a question. Perfume? That's it. Since I usually... That's the While we're on the sub... Yang it? Yes, that's her. Great. This is. नहीं भाई तेरे सामने नहीं करना। Well, hello. What? Oh, actually, I was... बट टॉप से निकलो, Can I क्यों relax? फाइट ले I रहे हो? know. 3 चार पांच you बंदे have के सामने। extreme tastes for... Shangli was. As one of my... रैंडम है पता नहीं इनको तो क्या बोल रहा है। So, where is that? Somewhere... ये लोग दिमाग ही नहीं चलाते, मतलब मेरे को ऐसा लगता है कभी कभी ऐसा लगता लिटरली। है ये डोटा का रैंडम फिर भी काफी बेटर थे। अरे मतलब तुम्हें पता है वो फाइट लूजिंग फाइट है, फिर वो फाइट ही क्यों लेना है जो पता है तुम्हें लूजिंग है? Are you ready? What it? वाई ऐसा डोटा में थे रैंडम उनको चिल्लाता था। इरिटेटिंग है रे ये लोग, और कुछ नहीं। तो इरिटेट करते हैं लिटरली। ये इंडिया सर्वर ही बेकार है क्या? शायद। अरे भैंस के इतना Heroes really got a lot. भाई ये पिंग स्पाइक दिमाग खराब कर देगा मेरा। ये क्या है भाई? ये पिंग को क्या हो रहा है? Now, 200 क्यों स्पाइक हो रहा है जल्दी? isn't altogether different. प्लीज यार एक गेम अच्छा चल रहा है। Here, let me teach you. Very carefully. You need to keep... Now, use your strong... Ooh! Now, don't forget... यार तू ये भी ले लेगा क्या? अबे इधर देखो भाई। हाँ मार दे तू वाले। पुश कर दे ब्रॉडी, तू सही खेल रहा है। पहले दे देता हूँ।
अबे यार बंद कर दे रे, गेम बंद कर दे, ऐसे पिंग तो चलती नहीं है। कोई नहीं। चलो दिक्कत है अपना टीम सही फाइट Wow, पिक the नहीं करता रे। essence you must take. So please don't waste it. और कुछ नहीं। All ब्लू three आ रहा है a भाई पहले। testament to the lengths you will anyway. Paimon wants This first one, the second one. Finally, all clear? Don't good. I'll leave you भाई ये one who मॉस्टोक्स क्या है? tries to sail. अब वो ले लेगा। Let's take these 3 perfumes कुछ over to the Statue of the Seven. हेलो ग्लू लॉन्च अटैक बोल के तू। भाई Compared to the that is true. 3 seconds. Thank you. कितना रो रहा है भाई रजिस्टर। अरे भाई क्या ही बोलूं मैं। मैंने बोल दिया ना। इतना ज्यादा रो रहा है भाई पूछो। उसके चारे में था तो फिर ये टूट के मिल जाता। ये दुख काहे खत्म नहीं होता। पिंग क्यों इतना नाटक कर रहा है? मुझे समझ में नहीं आ रहा है क्या दिक्कत है भाई। जब मुंबई से आए तब भी नाटक है। तो लिंक कलेक्टर क्यों ले रहा है? मेरे को पता तो भाई। भाई क्या दिक्कत है ये स्किन में जो नहीं खेल पा रहा हूँ मैं इतने टाइम। देख फिर भी उसके इफेक्ट्स तेरे लिए बहुत ज्यादा है। ठीक है देख ले तू, पर तेरी पूरी टीम जो है वो कर रही है। तेरा स्कोर ठीक है। पिंग क्यों इतना गंदा जा रहा है भाई? क्या सीन है? गंदा पिंग गंदा पिंग। मेरा भी आ रहा है गंदा। 285 6 10 6 छोड़ दे भाई उसको। 285 ऐसे तो करो भाई। फिर रो रहा है। अरे इसकी बहन ग्लू को बोलो हक दे भाई। ये कभी अल्टी मारेगा ये बंदा? वो पहले मार चुका था। ब्लू पे चेस कर रहा था तभी अल्ट मार के चेस कर रहा। भाई नहीं यार उसको आता नहीं ब्लू। उसको बता रहा है कि कैसे पड़ेगी अल्टीमेट। अरे भैंस की चेन्स तो अलग ही बज रही है। उसने कुछ लिखा है देख, पर्पल बार जब फुल हो जाएगा तब अल्टीमेट। क्या पर्पल बार किस में होता है? कौन से हीरो पे पर्पल? ग्लू के लिए, ग्लू को सिखा रहा है, जो भी सिखा रहा है। तुम्हारा चैट चेक करो। नहीं पर पर्पल बार कौन सा बार होता है? तो नहीं पता। ग्लू के नीचे एक बार है ना, माना नहीं है उसका? पता नहीं माना है वो, माना है वो कुछ बोल रहा पर पता नहीं, जानते ही। वो चैट में सिखाने की कोशिश कर। ये क्या है इतना अग्रेसिव खेल रहे हो यार? टी और सोलो ने भर दिया यार तुमने। भाई ये मॉस्को को क्या दिक्कत है भाई? तू क्यों बाला वेस्ट कर रहे हो? हर बार मार रहा है, कभी भी बफ ले रहा मार रहा है। भाला वेस्ट भाई। क्या ही बोले भाई। भाई निकलो निकलो। सोमा के सामने भी सोलो और सीजे आए थे तो सोमा रोना चल रहा है भाई सबका।
मेरा कोरोना चल रहा है भाई, कोरोना। तेरे टीममेट्स कोरोना है तो भाई। उनका ब्लू ले ले, लियो नहीं है ना। ये मार देंगे फिर भी मेरे को, वो लोग मार देंगे हमें। अबे कुछ एक चीज भी साथ ये देख, इसको भैंस का मैं कैसे दिख जाता हूँ हर जगह। हक है उसके क्या पास। इरिटेट कर रहा है। नहीं नहीं नहीं